हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स रिवाइज कर रहे थे। एंड अजेंडा फॉर टुडे इज कि आज जितना रिवीजन हो सकता है इन रिटन फॉर्म वी आर गोइंग टू डू दैट। देखो, हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा लिखते हैं ना चीजें माइंड में उतनी सेट होती हैं। अब ऑब्वियसली इतना टाइम तो है नहीं कि हर बार रिटन में ही रिवीजन करें, तो एटलीस्ट अगर आपकी एक रिवीजन भी रिटन में हो जाती है तो आप अपनी बाकी रिवीजन्स को ओरल फॉर्म में रख सकते हैं। सो अभी हमारा एम यही है कि आज जितने भी चैप्टर्स का रिटन रिवीजन हो जाएगा बहुत बढ़िया। कल मेरे ख्याल से धीरज सर का अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन सेशन है और परसों मैन्युफैक्चरिंग का सेशन है। तो जैसे ही वो आपके सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको 29 से बाकी चैप्टर्स का भी रिवीजन कराऊंगा। मगर बाकी चैप्टर्स में स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे पंप्स हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, तो कंप्रेसिबल फ्लो हो गया, टरबाइंस हो गया। सो इनकी हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे 4 आवर्स की एक क्लास जिसमें रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव हो जाएगा और शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनके केस में मैं ऐसे चलाऊंगा क्योंकि इस चैनल पे ना मैंने ऑलरेडी ये फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। मतलब आप लगा लीजिए काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ही क्वेश्चंस कराए हैं, पर उन चैप्टर्स को हमने ढंग से टच नहीं किया है, तो उन चैप्टर्स पे हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर आपको सही लगे, कहीं भी आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप इन बिटवीन मुझसे पूछ सकते हैं। सो अभी क्लास थोड़ा लंबा है, काफी सारा काम करना है और टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, है ना। सो हम लोग अभी विस्कोसिटी पे पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? विस्कोसिटी पे पहुंचे थे। सो विस्कोसिटी इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी व्हेन यू टॉक ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशंस, क्योंकि जहां भी फ्लूइड मूव करेगा सॉलिड सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा और वहां फ्रिक्शन फोर्सेस पिक्चर में आएंगी। सो हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर आपके पास एक सॉलिड सरफेस है, इट स्लाइड्स ऑन द ग्राउंड, देन देयर विल बी फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस रफनेस। उसी तरह अगर आपके पास एक फ्लूइड है एंड द फ्लूइड इज मूविंग ओवर द सरफेस, then friction force will come into picture, but now the friction force will be a result of viscosity. अब विस्कोसिटी की डेफिनेशंस लिखने के अलग अलग मेथड है। जैसे एक मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दिया टॉप पे, फिर सेकंड मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। गाइस जस्ट अ सेकंड, मेरे यहाँ पे नेटवर्क हैंग तो नहीं हुआ, लेट मी चेक। नहीं, मेरे यहाँ नेटवर्क सही चल रहा है। सो सेकंड जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंगली दे दिया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई कर देते तो अलग डेफिनेशन आ जाता। समझ रहे हैं ना। फिर आप क्या कहते हैं, अगर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की वैल्यू 1 है, देन शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी। समझ रहे हैं। तो आप इस तरह से अलग अलग डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। बट मेरा मेजर एम था कि व्हाट इज द फिजिकल इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने देखा कि व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज ओवर अ सॉलिड सरफेस, देन हाउ बाउंड्री लेयर कम्स इनटू पिक्चर। सो सम व्हाट दिस काइंड ऑफ फिगर वी आर गोइंग टू गेट। ऐसा कुछ हो रहा है, होने वाला है फिजिकल फॉर्म में। तो अगर आप यहां पे हमने क्या किया है, जैसे यहां पे नंबर लिखा हुआ है 4.8, प्लीज चेक ब्लू कलर में राइट हैंड साइड, यहां नंबर लिखा हुआ है 3.8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल की वेलोसिटी है 3.8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा मतलब था इस फिगर से, ठीक है ना। सो हमने देखा कि अगर हम 2 सेक्शंस लेते हैं तो हर सेक्शन पे हमें एक पॉइंट दिखाई देगा L। तो L के नीचे वाला जो रीजन है वहां फ्लो वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y डायरेक्शन का फंक्शन है, y डिस्टेंस का फंक्शन है। मगर L के ऊपर जो रीजन है वहां वेलोसिटी y का फंक्शन नहीं है। सो ऊपर वाले रीजन को हम बोलते हैं फ्री स्ट्रीम और नीचे वाले रीजन को आप बोलते हैं बाउंड्री लेयर। फिर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखा फॉर बाउंड्री लेयर। सो इनिशियल पोर्शन ऑफ द फ्लो इज लेमिनार, लेटर ऑन पोर्शन ऑफ द फ्लो इज टर्बुलेंट। और वो कैसे चेक करना होता है? रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से चेक करना होता है। गाइस ध्यान रखना है, रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यूज हो वो एक्सपेरिमेंट से आई हैं, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से आई हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत कंट्रोल्ड कंडीशंस में किए गए थे। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, जैसे सरफेस रफनेस की वैल्यू बहुत बढ़ जाए या सिस्टम में वाइब्रेशन आ जाए, तो ये जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं ये क्रिटिकल वैल्यूज भी चेंज कर जाती हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ स्पेसिफिक केसेस की वैल्यूज हैं जो हम अपने सिलेबस में सॉल्व करते हैं।
फिर आप आगे बढ़े थे, आपने बोला था बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, लेमिनार बाउंड्री लेयर के लिए थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, फिर आपने मुझे बताया कि इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने शेयर स्ट्रेस की बात की, तो शेयर स्ट्रेस पे जैसे कभी कभी एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, शेयर स्ट्रेस पे एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है जो ड्रैग फोर्स से पता लगता है, तो वो हम देखेंगे अभी। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे डेल्टा जो है वो प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होता है, मगर जो वॉल शेयर स्ट्रेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है। ये चीज आप नोट कर सकते हैं, वॉल शेयर स्ट्रेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है। तो लीडिंग एज पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम और ट्रेलिंग एज पे शेयर स्ट्रेस मिनिमम, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूला में एक मैथमेटिकल डिसकंटिन्यूटी भी है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, नाउ गाइस चेक नेक्स्ट पॉइंट। सो हमने कितने पॉइंट्स लिखे हैं? आई थिंक हमने अब तक जो पॉइंट्स लिखे हैं ये था थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग शेयर स्ट्रेस, है ना, रिगार्डिंग शेयर स्ट्रेस एंड वॉल शेयर स्ट्रेस। नाउ वी विल राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग ड्रैग फोर्स। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने सुबह का सेशन नहीं देखा है तो मैं बता दूं गाइज, हमारा जो मेजर एजेंडा है अभी का, वो मेजर एजेंडा है कि हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, क्विकली से फ्लूइड मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आज के दिन में इसको कंप्लीटली कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, मगर जितने चैप्टर्स कवर अप हो पाएंगे मैं करूंगा, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके सेपरेट सेशन लगाऊंगा। सो ड्रैग फोर्स किसकी बात कर रहे हैं? ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं। सो गाइज हमें पता है कि ये हमारे पास प्लेट था, ठीक है ना, और प्लेट के सरफेस पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूं डी ए, तो इस पॉइंट पे एक शेयर स्ट्रेस आएगा टाउ डब्ल्यू का। सो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे जो शेयर फोर्स आएगी डी एफ वो बन जाएगा टाउ डब्ल्यू डी ए। मगर इस तरह से हर पॉइंट पे एक शेयर स्ट्रेस है, हर पॉइंट पे एक वॉल शेयर स्ट्रेस है, प्लेट के सभी पॉइंट्स पे वॉल शेयर स्ट्रेस है, तो प्लेट के सभी पॉइंट्स पे शेयर फोर्स है। तो जब आप सारी शेयर फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल शेयर फोर्स, टोटल विस्कस फोर्स ऑन द प्लेट मिल जाएगा। Now this force applied by moving fluid in the direction of flow, इसको हम viscous drag नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? viscous drag, viscous drag, the force applied by moving fluid in the direction of flow, ठीक है ना। सो कई बार क्या होता है कि टाउ डब्ल्यू का फंक्शन दे देते हैं, फंक्शन ऑफ टाउ डब्ल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ड्रैग फोर्स निकालना होता है, ऐसा एक क्वेश्चन बन जाएगा। सो जैसे मान लो कुछ भी दे दिया, सम कांस्टेंट बाय रूट एक्स, मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, के रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रल डी ए, इसका इंटीग्रल कर दोगे तो ड्रैग फोर्स मिल जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम लोग तो सिंपल सिनेरियो स्टडी करने वाले हैं। सिंपल सिनेरियोस का मतलब क्या है कि टाउ डब्ल्यू सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा, किसी भी पॉइंट पे जो टाउ डब्ल्यू है दैट विल डिपेंड ओनली अपॉन एक्स डिस्टेंस, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज। सो मेरे ख्याल से आप एक और सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं। वो सिंपल मेथड क्या लगा सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक फ्लैट प्लेट है और यहां से एक्स डिस्टेंस पर मैंने ये सारे पॉइंट्स ले लिए, इन सभी पॉइंट्स का शेयर स्ट्रेस सेम है। सो आई थिंक व्हाट आई कैन डू, आई कैन से दैट दिस स्ट्रिप, ये जो मैंने स्ट्रिप बनाई है, ये एक पतली सी स्ट्रिप बनाई है, इस पतली सी स्ट्रिप के सभी पॉइंट्स पे वॉल शेयर स्ट्रेस सेम आएगा। टाउ डब्ल्यू टाउ डब्ल्यू टाउ डब्ल्यू सभी पॉइंट्स पे वॉल शेयर स्ट्रेस सेम आएगा, है ना। सो मान लीजिए ये स्ट्रिप की थिकनेस है dx, और भैया हमारी प्लेट की जो विड्थ है अलोंग z डायरेक्शन दैट इज b, और प्लेट की जो लेंथ है अलोंग x डायरेक्शन दैट इज l। सो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे एक सिंगल स्ट्रिप का जो एरिया है दैट इज bdx, उस सिंगल स्ट्रिप पे टाउ डब्ल्यू कितना है, शेयर स्ट्रेस कितना है टाउ डब्ल्यू, तो इस सिंगल स्ट्रिप का शेयर फोर्स आ गया। अब आपने क्या किया, आपने पूरे सरफेस को बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली स्ट्रिप है x इक्वल टू 0 पे, सबसे लास्ट स्ट्रिप है x इक्वल टू l पे। तो जब आप सारी स्ट्रिप्स का शेयर फोर्स ऐड कर दोगे तो टोटल शेयर फोर्स यानी कि टोटल विस्कस ड्रैग आ जाएगा। कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 टू l। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम तो रेक्टेंगुलर प्लेट सॉल्व कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट में b की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो ड्रैग फोर्स क्या बन जाएगा, ड्रैग फोर्स विल बी b इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू 0 टू टाउ w dx, राइट। अब करना बहुत आसान हो गया।
अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि मान लो आपको दिया हुआ है कि टाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू के बाय रूट एक्स, फाइंड आउट द ड्रैग फोर्स, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू बी इंटीग्रल ऑफ के बाय रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एल, ऐसे बोलोगे ना। अब के एक कांस्टेंट है तो के इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी के। सो 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, वो बन जाता है 1/2 अपॉन 1/2 यानी कि 2। सो ये वैरी कहां से कहां करेगा, एक्स कहां से कहां वेरी करेगा, 0 से एल, तो आंसर आ जाएगा 2bkl रूट अंडर रूट, ये आंसर आ जाएगा 2bk अंडर रूट ऑफ एल। सो दिस इज द ड्रैग फोर्स। यस और नो, प्लीज डू लेट मी नो, समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि आपको टाउ डब्ल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, फाइंड आउट द ड्रैग फोर्स। तो प्लीज एक बार जरूर बताइए, अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज मैं रिपीट कर दूंगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है मगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप कार डिजाइन करते हैं, फाइटर जेट डिजाइन करते हैं, तो आप ड्रैग फोर्स से निकालते हैं। ओके, सो मेरे ख्याल से आप लोग लिखने में बिजी हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं। सो एक्चुअली आपके और मेरे बीच में ना एक लैग भी चल रहा है, ठीक है भविन, अच्छा, आपके और मेरे बीच में लैग काफी चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हमें ये तो पता लग गया ड्रैग फोर्स क्या है, मगर एक चीज और नोट करो, अगर आप वॉल शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो वॉल शेयर स्ट्रेस इज नॉन यूनिफॉर्म, वॉल शेयर स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं है। वॉल शेयर स्ट्रेस वैल्यू इज नॉट सेम ऑन ऑल द पॉइंट्स, इट इज नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू। सो व्हेन द वॉल शेयर स्ट्रेस इज नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू, आई थिंक यू विल डिफाइन एन एवरेज वैल्यू। जब भी आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म टर्म होती है, 4 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के पास 8 टॉफी, दूसरे स्टूडेंट के पास 10 टॉफी, तीसरे स्टूडेंट के पास 12, चौथे स्टूडेंट के पास 14, तो नॉन यूनिफॉर्म टॉफीज हैं। सो आप बोलेंगे एवरेज वैल्यू, एवरेज टॉफी पर स्टूडेंट इज 11, सो एवरेज वैल्यू है ना। सो जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म टर्म आती है तो आप एक एवरेज टर्म डिफाइन करते हैं। सो व्हाट वी विल से एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस, क्या बोलेंगे, एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। एंड हाउ यू विल डिनोट इट, यू विल डिनोट इट बाय टाउ डब्ल्यू बार। कैसे डिनोट करेंगे, टाउ डब्ल्यू बार से डिनोट करेंगे। और टाउ डब्ल्यू बार की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी द टोटल ड्रैग फोर्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ द प्लेट, यानी कि इंटीग्रल ऑफ टाउ डब्ल्यू डी ए फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एल अपॉन एरिया। और अगर स्ट्रिप वाला मेथड यूज करते हो तो बी इंटीग्रल ऑफ टाउ डब्ल्यू डी ए फ्रॉम 0 टू एल, यानी कि डी एक्स अपॉन बी एल, तो बी और बी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपका वॉल शेयर स्ट्रेस, एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस बन जाएगा 1/L इंटीग्रल ऑफ टाउ डब्ल्यू डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसमें ना एक क्वेश्चन है जो गेट एग्जाम में आया हुआ है और हमने भी कई बार सॉल्व किया हुआ है। तो वो पूछता है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है जिसका टोटल एरिया है A, इस प्लेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 और 2, एंड फ्लूइड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो वो बोलता है कि ऑन पोर्शन 1 देयर विल बी अ ड्रैग फोर्स F1, ऑन पोर्शन 2 देयर विल बी अ ड्रैग फोर्स F2। So which drag force will be more? कौन सा ड्रैग फोर्स ज्यादा आएगा, जल्दी से बताइए, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बताइए, प्लीज बी फास्ट। कौन सा ड्रैग फोर्स ज्यादा आएगा, कौन सा ड्रैग फोर्स ज्यादा आएगा, कौन सा ड्रैग फोर्स ज्यादा आएगा। आई थिंक F1 विल बी ग्रेटर देन F2। क्यों, क्योंकि शेयर स्ट्रेस वैल्यू इज मोर टुवर्ड्स द लीडिंग एज, शेयर स्ट्रेस वैल्यू इज लेस टुवर्ड्स द ट्रेलिंग एज। तो जब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा। वेरी गुड भविन, बहुत बढ़िया बेटा। अब भविन क्वेश्चन काम पता है क्या करना है, आज आपका होमवर्क है, आप F1 और F2 का रेशियो फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे एज अ होमवर्क, F1 और F2 का रेशियो फाइंड आउट करोगे। थोड़ा सा सोचना, स्लाइड्स में ही आंसर है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L, और ये बन जाएगा x इक्वल टू L/2। F1 और F2 का प्रोबेबल रेशियो फाइंड आउट करोगे आज आप, ये आपका होमवर्क रहेगा। कैसे करना है, टाउ W इज इक्वल टू k बाय रूट एक्स ले लिया, F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 0 टू L/2 इंटीग्रेट कर दिया, और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो L/2 से L इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे, ठीक है ना। सो दिस विल बी योर होमवर्क।
Now guys, I hope you remember in solid mechanics, friction force by normal reaction that is called as coefficient of friction, है ना, ये solid में होता था, coefficient of friction कहते थे। उसी तरह fluid mechanics में हम क्या करते हैं, हम wall shear stress, तो स्ट्रेस यानी कि पास्कल, स्ट्रेस यानी कि पास्कल, तो पास्कल को पास्कल से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, हाफ रो यू नॉट स्क्वायर। इसको हम डायनेमिक प्रेशर बोलते हैं। अभी इसके बारे में बात नहीं करते, बर्नौलीज इक्वेशन में इसके बारे में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक प्रेशर। तो जो भी बच्चे मेरे साथ फुटबॉल वाला क्वेश्चन करते हैं, तो फुटबॉल वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि फ्रंट पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सो ये डायनेमिक प्रेशर होता है। तो पास्कल को पास्कल से डिवाइड कर देंगे तो एक डायमेंशनलेस टर्म आ जाएगी। उस डायमेंशनलेस टर्म को हम स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बोलते हैं। यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पे स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है ना। अब जैसे टाउ एक्स का फंक्शन है, वैसे ही स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी एक्स का फंक्शन होता है। एंड एज पर ब्लेसियस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यू आती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 0.664 बाय रूट REX। किसी भी सेक्शन का हमें अगर CF लिखना हो, किसी भी पॉइंट का अगर हमें CF लिखना हो, तो ब्लेसियस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब जैसे आपने टाउ W डिफाइन किया, so wall shear stress at a point, correspondingly you have skin friction coefficient at a point। अब आपने वॉल शेयर स्ट्रेस के लिए एवरेज शेयर स्ट्रेस डिफाइन किया, एवरेज शेयर स्ट्रेस फॉर अ प्लेट। उसी तरह आप एवरेज स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट यानी ड्रैग कॉफिशिएंट भी डिफाइन करते हैं। तो जब भी आप बोलते हैं ना ड्रैग कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं होता, वो एवरेज स्किन फ्रिक्शन कॉफिशिएंट फॉर अ प्लेट होता है। तो एवरेज ड्रैग कॉफिशिएंट कैसे लिखेंगे, CD यानी कि CF बार कैसे लिखेंगे, तो CF क्या होता है, वो तो वॉल शेयर स्ट्रेस बाय डायनेमिक प्रेशर ऑफ फ्री स्ट्रीम होता है। मगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/L इंटीग्रल ऑफ CF dx फ्रॉम 0 to L। CF का मतलब फॉर अ पॉइंट, CF बार का मतलब फॉर द एंटायर प्लेट। सो ये हमारे पास CD और CF आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। फटाफट से एक बार क्विकली ये सभी पॉइंट्स को देख लो। अभी हम इस पे और डिस्कशन नहीं करते, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि पाइप के अंदर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन क्या होता है और डेवलपिंग फ्लो, डेवलप्ड फ्लो, इन सब चीजों का क्या मीनिंग है, पहले हम इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं बाउंड्री लेयर से रिलेटेड, वो हम बाउंड्री लेयर चैप्टर में पढ़ेंगे। सो मुझे कौन बताएगा इज दिस क्लियर और नॉट, यहां तक सभी को क्लियर है। वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में CD डायरेक्टली दे दें, ऐसा भी कर सकते हैं क्वेश्चन में CD डायरेक्टली दे दें। जैसे वो बोलता है कि आपके पास एक कार है, बाय द वे ये सिविल में क्वेश्चन आया था, दिखता क्वेश्चन मैकेनिकल का है, लगता है जैसे क्वेश्चन मैकेनिकल का है, मगर सिविल में आया था क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या आया था, ये मैंने कराया भी है क्लास में। सो क्वेश्चन है कि अ कार इज मूविंग अहेड विद अ स्पीड u, कोई स्पीड से मूव कर रहा है। सो क्या होगा, कार के रिस्पेक्ट में हवा पीछे की तरफ मूव करेगी, तो हवा क्या करेगी, कार के सरफेस पे वॉल शेयर स्ट्रेस लगाएगी। सो उन्होंने दिया हुआ था ड्रैग कोफिशिएंट इतना है, हवा की डेंसिटी दे रखी थी, हवा की स्पीड पता लग गई, तो ड्रैग कोफिशिएंट इनटू हाफ रो यू स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा, एवरेज शेयर स्ट्रेस बन जाएगा। और कार का एरिया दे रखा था, बोला हुआ था कि कार को मॉडल करो एज अ फ्लैट प्लेट, कार का एरिया दे रखा था। सो एवरेज शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया ड्रैग फोर्स हो गया, आपको ड्रैग फोर्स पता लग गया। सो गाड़ी पे ड्रैग फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, पहला पार्ट ये था 2 मार्क्स का। और उसके बाद बोला हुआ था फाइंड आउट द पावर कंजम्पशन अगेंस्ट ड्रैग फोर्स। अरे भैया ड्रैग फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, गाड़ी बढ़ रही है आगे की तरफ, तो पावर तो कंज्यूम होगी। तो पावर कैसे लिखेंगे, ड्रैग फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखेंगे, तो ये पावर आ गया। सो इस तरह से भी एक बेसिक क्वेश्चन बन जाता है आपका ये वाली टर्म से रिलेटेड, ठीक है। अब आप विस्कोसिटी में ही नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन इन फ्लो थ्रू पाइप्स,
फ्लो थ्रू पाइप्स या फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर चैनल्स, बेसिकली इंटरनल फ्लो के केस में कैसा बाउंड्री लेयर बनता है? फ्लो थ्रू पाइप्स। गाइस जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक बार बताओ सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। प्लीज नोट, अभी मैं वो काम कवर अप कर रहा हूं। पहले तो मेरा एम भागने का नहीं रहेगा, मैं भगाना नहीं चाहता, नहीं तो पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। हम एमएसक्यू क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर पाएंगे, क्वेश्चन के टाइप्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो मैं भगाना नहीं चाहता। आराम से चलेंगे, जितना कवर अप हो जाएगा ठीक है। बाकी हम 29, 30, 31 को कवर अप करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा, अभी हम कॉमन चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो मैकेनिकल, सिविल और एक्सी के लिए कॉमन है। फिर कुछ टाइम में मैं सिविल के लिए एक मिसलेनियस वीडियो भी बनाऊंगा और कोशिश करूंगा एक्सी के लिए भी एक मिसलेनियस वीडियो बनाऊं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे सिविल को ओपन चैनल फ्लो चाहिए तो थोड़े टाइम में ही, इस हफ्ते में ही कुछ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लो थ्रू पाइप्स, सो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। सब सही लग रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है? तब तक मैं एक फिगर बना लेता हूं। सो मेरे ख्याल से यहां पे फिगर कंप्लीट हो जाएगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे टॉप पे बनाता हूं। शायद नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर टॉप पर बनाता हूं। आप अपनी कॉपीज को लैंडस्केप मोड में रख लीजिए, आप अपनी कॉपीज को लैंडस्केप मोड में रख लीजिए और एक पाइप बनाइए। लैंडस्केप मोड में रख लीजिए, एक पाइप बनाइए और पाइप का सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए। पाइप का लेंथ थोड़ा ज्यादा दिखाना, अदरवाइज फिगर ढंग से बनेगा नहीं, फिगर साफ सुथरा नहीं बनेगा। थोड़ा सा ज्यादा बनाना, फिगर साफ सुथरा नहीं बनेगा। ओके, नाउ गाइस व्हाट आई हैव शोन इज, आई हैव शोन अ पाइप। सो बेसिकली 3D में पाइप आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना? सर्कुलर होता है, पाइप का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। ये पाइप की सेंटर एक्सिस है। सो ये वाली जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज द इनलेट, राइट हैंड साइड दैट इज द आउटलेट। सो हम इसको बोल देते हैं x = L बोल देते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट वी हैव, वाटर इज एंटरिंग द पाइप विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये एज्यूम कर रहे हैं, रियल में ऐसा नहीं होता, मगर अभी के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि water enters the pipe with a uniform velocity and that velocity can be u0 also, maybe it is u0. So this is the side from where water enters the pipe. अब I think as soon as water enters the pipe, the lowermost particles, they will come in contact with the solid surface. They will achieve no slip condition. Now this layer will slow down the second layer will slow down the third layer, and as the fluid will move ahead, there will be a formation of boundary layer in this manner. Yes or no? Am I correct? Am I correct? क्या इस तरीके से boundary layer बनेगा? But please note, as the fluid moves ahead, not only the bottom particles, even these particles will also come in contact with the surface. So these particles will also achieve a no slip condition. Now these particles will slow down the second layer will slow down the third layer, and as the fluid will move ahead, we will see a boundary layer formation like this. So this is how the two boundary layers will look like. In fact, not only from the top or from the bottom, actually क्या होगा, ये वाली जो पूरी लेयर है, ये लेयर नो स्लिप कंडीशन अचीव करेगी। ये लेयर सेकेंड लेयर को स्लो डाउन करेगी, सेकेंड लेयर थर्ड लेयर को स्लो डाउन करेगी। तो इस तरह से फिगर दिखाई देगा। तो जो बाउंड्री लेयर बनेगी ना, वो बाउंड्री लेयर, गाइस एक मिनट, तो जो बाउंड्री लेयर बनेगी वो एक्चुअल में बाउंड्री लेयर इस तरीके की बनेगी। ये कुछ इस तरीके की कोन टाइप बन जाएगी, आइसक्रीम के कोन जैसे लगेगा। यस और नो? यस और नो? प्लीज बी फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो। मेरे ख्याल से बाउंड्री लेयर ऐसे कोन टाइप बन जाएगा, हाँ या ना? है ना? चारों तरफ से बनेगी, चारों तरफ से बनेगी, बिकॉज जो सॉलिड सरफेस है वो एक गोल सॉलिड सरफेस है। अब हमें पता है बाउंड्री लेयर और सरफेस के बीच में जो रीजन होता है, ये वाली रेड लाइन और सरफेस के बीच में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर, और रेड लाइन के बाहर जो रीजन होता है उसको बोलते हैं फ्री स्ट्रीम। सो मेरे कहने का मतलब है दैट फ्री स्ट्रीम विल बी कोनिकल इन शेप। फ्री स्ट्रीम कैसा बनेगा? कोनिकल शेप का बनेगा।
अब आप क्या कीजिए, आप एक क्रॉस सेक्शन लीजिए, थोड़ा सा आगे एक क्रॉस सेक्शन लीजिए। जैसे मैंने x1 डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन बनाया, यहां पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया ऐसे। ओके, नाउ व्हाट आई फील व्हेन वी कंसिडर द फ्री स्ट्रीम रीजन, तो फ्री स्ट्रीम रीजन में हर जगह वेलोसिटी सेम होता है, तो फ्री स्ट्रीम रीजन में तो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा दिखाई देगा। दिस विल बी द वेलोसिटी प्रोफाइल इन फ्री स्ट्रीम रीजन। बट इनसाइड द बाउंड्री लेयर जो पार्टिकल सरफेस के पास हैं वो स्लो मूव करते हैं, जो पार्टिकल सरफेस से दूर हैं वो फास्ट मूव करते हैं। तो आपको इस तरीके का वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगा। ऐसे ही मैं एक और सेक्शन लेता हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे, एक और सेक्शन लेता हूं कुछ और डिस्टेंस आगे। सो मेरे ख्याल से क्या होगा, मेरे ख्याल से आप बोलेंगे ए ऐसे ऐसे, ये आपके पास वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाएगा। अब गाइज एक चीज नोट करो, जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो वो जो वेलोसिटी प्रोफाइल का स्ट्रेट लाइन पोर्शन है, यानी कि फ्री स्ट्रीम रीजन है, फ्री स्ट्रीम रीजन छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ती जा रही है और हमारे पास एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन आएगा जहां पे सारी बाउंड्री लेयर्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यानी कि कोन का टिप आ जाएगा। तो फ्री स्ट्रीम रीजन तो खत्म हो जाएगा, वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन पोर्शन दिखाई नहीं देगा, वहां पे आपको वेलोसिटी प्रोफाइल पूरी की पूरी इस तरीके की दिखाई देगी, कर्व्ड वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगी। यस और नो, एम आई करेक्ट? यस और नो, प्लीज बी फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो, एम आई करेक्ट? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगी। अब दरअसल क्या होता है, अगर आपके पास स्टेडी स्टेट इनकंप्रेसिबल फ्लो हो थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अगर आपके पास कैसा फ्लो हो, स्टेडी स्टेट इनकंप्रेसिबल फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, सो आपको पता लगेगा कि इस पॉइंट के बाद, इस क्रॉस सेक्शन के बाद जितने भी सेक्शंस हैं, सभी सेक्शंस का वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है। सभी सेक्शंस का वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है। तो भविन बिल्कुल सही बता रहा है। भविन कह रहा है तो सर इस सेक्शन के बाद जो फ्लो होता है ना, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलप्ड फ्लो। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि विस्कोसिटी के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो डेवलप्ड फ्लो मान के सॉल्व करते हैं। और इससे पहले वाले पोर्शन की बात करें तो जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी प्रोफाइल अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपिंग फ्लो बोलते हैं। सो प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, प्लीज एक चीज ध्यान रखिए कि हम फ्लो थ्रू पाइप्स में इंटरनल फ्लोज के केस में दो फर्दर रीजन डिफाइन करते हैं। एक होता है डेवलपिंग फ्लो, जिसका मतलब होता है जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल की शेप चेंज कर रही है। अब जरा अपने फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट में जाना, यहां पे देख लो, जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी प्रोफाइल की शेप चेंज कर रही है। पहले वेलोसिटी प्रोफाइल सिर्फ ऐसे थी, अब वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे हो रही है ना? तो वेलोसिटी प्रोफाइल की शेप चेंज कर रही है। तो ये डेवलपिंग फ्लो आएगा या डेवलप्ड फ्लो आएगा? प्लीज बी फास्ट, प्लीज डू लेट मी नो। ये डेवलपिंग फ्लो आएगा या डेवलप्ड फ्लो आएगा? कौन सा फ्लो आएगा? ये डेवलपिंग फ्लो आएगा या डेवलप्ड फ्लो आएगा? प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से बता दीजिए। देखिए काफी सारा काम है, अभी तो हम विस्कोसिटी एंड बाउंड्री लेयर कर रहे हैं, उसके बाद सरफेस टेंशन करने के बाद पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, मैनोमीटर्स, फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड सरफेसेस, ब्यूएंसी, काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स में फ्लो क्लासिफिकेशन है ना, डायनेमिक्स में यूलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, एटलीस्ट इतना तो आज करेंगे। वेरी गुड। डेवलपिंग फ्लो, कौन सा फ्लो है? डेवलपिंग फ्लो है। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये डेवलपिंग फ्लो हुआ, मगर ध्यान रखना है डेवलप फ्लो का मतलब है कि एक बार बाउंड्री लेयर आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है, फ्री स्ट्रीम रीजन खत्म हो जाता है, तो अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप हुआ तो वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट हो जाएगी। अब फ्लूइड आगे बढ़ेगा मगर वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं डेवलप फ्लो। अब इससे रिलेटेड ना काफी सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। आओ देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं हमने दो सेक्शंस बनाए अभी। एक सेक्शन था जैसे इनलेट सेक्शन ले लेता हूं। क्या सेक्शन ले लेता हूं? इनलेट सेक्शन ले लेता हूं। ठीक है। सो इनलेट सेक्शन पे तो फ्लो वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी। सो मेरे ख्याल से इस वेलोसिटी को आप U0 भी बोलते हैं, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी भी बोलते हैं।
और आउटलेट सेक्शन पे जो फ्लो आउटलेट नहीं लेना चाहिए, सेकंड सेक्शन ले लेता हूं x1 डिस्टेंस वाला। तो सेकंड सेक्शन पे जो फ्लो वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी प्रोफाइल थी, वो कुछ ऐसे थी, है ना। अब गाइस दरअसल क्या होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल की जो वॉल्यूम होती है यही डिस्चार्ज के बराबर होती है। वेलोसिटी प्रोफाइल की वॉल्यूम क्या होती है, डिस्चार्ज के बराबर होती है। अब अगर हमारे पास इनकंप्रेसिबल फ्लो है तो जितना पानी यहां से एंटर कर रहा है उतना पानी इस सेक्शन को क्रॉस करेगा, उतना ही पानी इस सेक्शन को क्रॉस करेगा, उतना ही पानी बाकी सेक्शंस को भी क्रॉस करेगा। तो सभी सेक्शंस का डिस्चार्ज कैसा आएगा, सेम आएगा। सभी सेक्शंस का डिस्चार्ज तभी सेम आएगा जब सभी सेक्शंस की वेलोसिटी प्रोफाइल का वॉल्यूम सेम होगा। अब एक काम करते हैं, इन दो वेलोसिटी प्रोफाइल्स को इकट्ठे बनाते हैं। सो मेरे ख्याल से अगर मैं दोनों वेलोसिटी प्रोफाइल को इकट्ठे बनाऊं तो वॉल्यूम तो सेम नहीं आ रहा है। दरअसल होता क्या है, सेकंड जो सेक्शन है उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे दिखाई देती है। कहने का मतलब सेकंड सेक्शन की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसी तरह थर्ड सेक्शन की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो भैया जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम डेवलपिंग फ्लो इन पाइप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेवलपिंग फ्लो इन पाइप की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ता है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बढ़ती जाती है, मगर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट में फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। एक्चुअली कांस्टेंट तो वहां भी नहीं रहती, बट वो हमारी एक एजम्पशन हमने हमारे सिलेबस में ले रखी है, वो हमने हमारे सिलेबस में एक एजम्पशन ले रखी है, कांस्टेंट वहां भी नहीं होती। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज द फ्लूइड मूव्स अहेड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, कि अगर यू नॉट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, तो क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी भी बढ़ेगी। सो देयर इज एन एक्सेलरेशन इन द फ्लो। इसको कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, पॉजिटिव कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं इसको। बाकी ये फिगर मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा फ्लो थ्रू पाइप्स में, तब वहां पे थोड़ा और इलैबोरेट मैनर में और अच्छे से मैनर में डिस्कस करेंगे। अभी तो जो पॉइंट्स बता रहा हूं वो सिंपल है, चलो ठीक है, क्योंकि अभी आपको लोकल एक्सेलरेशन नहीं पता, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन नहीं पता ना, तो जब वो चीजें पता लग जाएंगी तो एक बार ये फिगर दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ चेक फ्लो थ्रू पाइप्स में जैसे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जैसे ही x की वैल्यू बढ़ती है वॉल शेयर स्ट्रेस घटता है। दिस इज फॉर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट्स। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज कर रही है, मगर जैसे ही आप डेवलप्ड रीजन में जाएंगे वेलोसिटी प्रोफाइल तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो डेवलप्ड रीजन में हर जगह वॉल शेयर स्ट्रेस सेम होता है। तो अगर आप पाइप की बात करेंगे ना, इफ यू विल ड्रॉ अ पाइप द वॉल शेयर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द लीडिंग एज, एंड एज द फ्लूइड मूव्स अहेड द वॉल शेयर स्ट्रेस डिक्रीजेस। But once you enter the developed region, the wall shear stress becomes constant. ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टाउ w की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू इंक्रीज करेगी मगर टाउ w कांस्टेंट रहेगा। ये आपका डेवलप्ड रीजन है। मोर देन वन डायरेक्शन का फंक्शन होगा। तो एक्चुअल में भावेन बेटा वन डायरेक्शन का, हाँ मतलब ये बात सही है, x का भी फंक्शन होगा और y का भी फंक्शन होगा, ये बात बिल्कुल सही है। सो एक्सेलरेशन नहीं बोलो, वेलोसिटी बोलो, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। वैसे एक्सेलरेशन भी होती है, मगर आप जो टर्म बोल रहे हैं आप वेलोसिटी के लिए की टर्म्स में, मतलब आपका जो मीनिंग था वो वेलोसिटी को लेकर था। ठीक है, अच्छा अब अभी के लिए तो सिर्फ यही पॉइंट याद रखने हैं, इसको हम इलैबोरेट करेंगे, इस फिगर को हम ज्यादा इलैबोरेट करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स में। मगर अभी के लिए क्या याद रखना है, अभी के लिए ये याद रखना है कि डेवलप्ड फ्लो का मतलब होता है वेलोसिटी प्रोफाइल हर जगह सेम है, और विस्कोसिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप डेवलप्ड प्रोफाइल की बात करते हैं।
ठीक है। फिर दूसरा फिगर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि डेवलप्ड फ्लो का मतलब होता है हर जगह वेलोसिटी प्रोफाइल सेम है, इसलिए हर जगह वॉल शियर स्ट्रेस भी सेम होता है। तो ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं विस्कोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब विस्कोसिटी में क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। सो गाइस, कई बार ऐसा होता है, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन है तो मैं उसका हल्का सा हिंट ले रहा हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। सो एक क्वेश्चन है गेट 2004 का, आई थिंक। सो क्या पूछा गया था कि आपके पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ऑयल की लेयर है, तो कैपिटल H हाइट बन गया। फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक रोप है जो इस तरह से टाइड है और यहाँ पे एक ब्लॉक लटक रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैकेनिकल में भी, सिविल में भी। सो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। सो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है जो, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, व्हाट विल बी द फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। क्या चीज पूछी हुई थी, फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पूछा हुआ था। अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, देखो सबसे पहले तो ये कि क्या होगा, जैसे से फॉर एग्जाम्पल इसका एक सिंपल वर्जन लेते हैं, तो सिंपल वर्जन में ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ऑयल की लेयर है और ऑयल के ऊपर एक प्लेट है, पतली सी प्लेट है जो फ्लोट कर रही है, टोटली बाहर है, ठीक है। सो क्या होगा, मान लेते हैं इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है। अगर इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, ऑयल भी रेस्ट पे है, तो ऑयल के अंदर 5.0 हो जाएगा। ऑयल के अंदर 5.0 हो गया तो ऑयल के अंदर टाउ भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑयल में कोई भी विस्कस स्ट्रेस नहीं है। अब जरा प्लेट के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। तो जब आप प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहला तो प्लेट का वेट आएगा और वेट के कंपोनेंट बन जाएंगे W cos थीटा, W sin थीटा एंड W cos थीटा, है ना। इस तरह से कंपोनेंट बन जाएंगे। और प्लेट जो है ऑयल के साथ कांटेक्ट में है, तो ऑयल तो नॉर्मल स्ट्रेस लगाता है और शेयर स्ट्रेस लगाता है, मगर शेयर स्ट्रेस 0 है, तो मैंने सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस शो कर दिया। इसका मतलब W cos थीटा तो बैलेंस होगा मगर W sin थीटा बैलेंस नहीं होगा। अब अगर W sin थीटा बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, प्लेट मूव करना चालू कर देगी। गाइस, मैं क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक मेथड बता रहा हूं। प्लेट मूव करना चालू कर देगी। अब जैसे ही प्लेट मूव करना चालू करेगी, आप क्या बोलेंगे, ये जो लेयर ऑफ ऑयल है ये प्लेट के कांटेक्ट में है। बेसिकली क्या होगा कि ये लेयर जो है प्लेट के साथ नो स्लिप कंडीशन बनाएगी। तो अगर प्लेट v वेलोसिटी से आगे जा रही है तो लेयर भी v वेलोसिटी से आगे जाएगी। मगर ये वाली जो लेयर है ये सॉलिड सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो नो स्लिप कंडीशन के कारण ये रेस्ट पे रहेगी। अगर मैं इसे x डायरेक्शन ले लूं और इसे y डायरेक्शन ले लूं, y के अलोंग वेलोसिटी चेंज कर रही है। यहां पे वेलोसिटी कितनी है, 0, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल V। वेलोसिटी जो है y का फंक्शन है, यानी कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो चुका है। इनफैक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर प्लेट नीचे जा रही है तो प्लेट के रिस्पेक्ट में ऑयल जो है ऊपर जा रहा है, रिलेटिव मोशन। तो प्लेट के रिस्पेक्ट में ऑयल ऊपर जाएगा, तो बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा ऐसे। तो आपको ये बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन दिखाई देगी, है ना। अब बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन में क्या बोलोगे कि यहां से यहां तक तो डेवलपिंग फ्लो होता है और फिर यहां से यहां तक डेवलप्ड फ्लो आएगा, मगर हम डेवलपिंग फ्लो को कंसिडर नहीं करते। हमारे लिए डेवलप्ड फ्लो ही होता है। हमारे लिए कैसा फ्लो होता है, डेवलप्ड फ्लो होता है। तो सब जगह वेलोसिटी प्रोफाइल या सब जगह वॉल शियर स्ट्रेस सेम आएगा। गाइस, बताइएगा इतना, प्लीज बताइएगा इतना, क्या ये सही है, क्या मैंने सही बोला कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कैसे होगा या फिर डेवलपिंग फ्लो कैसे दिखाई देगा, डेवलप्ड फ्लो कैसे दिखाई देगा? जल्दी से बताइए, प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से बताइए। गाइस, मैं पहले ही बताता हूं, देखो क्या होता है
क्लास में हमेशा वाला मेरा डायलॉग, देखो जब मैं क्लास में बैठा हूं ना तो मैं आपका फेस रीड कर सकता हूँ, मुझे पता रहता है कि यार मेरे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है तो इनके पास जाके पूछ लेता हूँ एक बारी, ठीक है ना। बट अभी तो क्लास नहीं चल रही, अभी तो यार मेरे सामने रिंग लाइट रखी है, उसकी चकाचौंध पड़ रही है, ऊपर से एक व्हाइट लाइट जल रही है जिससे पता लग रहा है कि कैमरा ऑन है, पर मेरे को आप नहीं दिखाई दे रहे हो, तो मुझे तभी पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, थ्रू योर कमेंट्स। तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। अब गाइस देखो क्या है, अब हमें पता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कैपिटल V स्पीड से मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, क्वेश्चन ये आ सकता है फाइंड आउट द वॉल शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेट और फाइंड आउट द ड्रैग फोर्स ऑन द प्लेट। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहला तो ये हमें ये पता लग गया कि अगर ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है तो मैं हमेशा फ्लो को x डायरेक्शन लेता हूं और परपेंडिकुलर y डायरेक्शन बन जाती है। सो जब मैं y के अलोंग मूव करता हूं, पहले पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 0, यहां पे वेलोसिटी कितनी है कैपिटल V जो कि नो स्लिप कंडीशन के कारण है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी जो है y का फंक्शन है। वेलोसिटी क्या है, y का फंक्शन है। सो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी प्रोफाइल शो करेंगे, तो इस तरह से हमें एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वेलोसिटी प्रोफाइल होगी कैसी, लीनियर होगी, पैराबोलिक होगी, क्यूबिक होगी, लॉगरिथमिक होगी, कैसी होगी। दरअसल क्या होता है, अगर आपके पास ग्रेविटी के कारण या शेयर फोर्सेस के कारण, तो यहाँ पे ग्रेविटी और शेयर फोर्सेस हैं, ग्रेविटी के कारण या शेयर फोर्सेस के कारण एक न्यूटोनियन फ्लूइड का फ्लो होता है, तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है। सो आपके केस में जब तक आपको प्रेशर फोर्स मेंशन ना हो या स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि पैराबोलिक है वेलोसिटी प्रोफाइल, क्यूबिक है, जब तक आपको कुछ भी मेंशन ना हो तब तक आप लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल ही लेंगे। इसका मतलब क्या है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब है कि यहां से y डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी u, और ये वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, ये वेलोसिटी लिखेंगे लीनियर फंक्शन ऑफ y यानी कि ay प्लस b। बट हमें पता है y इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, नो स्लिप कंडीशन, y इक्वल टू कैपिटल H पे वेलोसिटी कैपिटल V है बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, ठीक है ना। सो ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, आप सीधा बोल सकते हैं अरे भैया लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, जिसमें m का मतलब होता है स्लोप, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पे y की जगह वेलोसिटी और x की जगह y है, तो ये बन जाएगा u इज इक्वल टू u2 माइनस u1 बाय y2 माइनस y1 यानी कि h माइनस 0 सॉरी कैपिटल V माइनस 0 बाय h माइनस 0। तो ये तो आ गई आपके पास स्लोप। और c का मतलब क्या होता है, c का मतलब होता है वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0, तो b का मतलब होगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन y इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 0। तो आपका जो लीनियर वेलोसिटी फंक्शन है वो डायरेक्टली ये आ जाएगा, किसी भी पॉइंट जो कि y डिस्टेंस पे है आप वहां वेलोसिटी लिख सकते हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, एक बार बता दो गाइस, समझ आया या नहीं आया। एक तो आपके और मेरे बीच में ना लैग चल रहा है। सो यहाँ पे जो मेरी वीडियो है कमेंट सेक्शन, मतलब मैं जो दूसरी स्क्रीन पे देखता हूं वो बार बार पीछे हो जाती है, 1.5 मिनट पीछे चली जाती है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आपने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी लिख लिया, अब आपने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी लिख लिया। अब ये चीज ध्यान रखनी है, ये सिर्फ मैकेनिकल का क्वेश्चन नहीं है, ये सिविल, मैकेनिकल, एक्सी तीनों में ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप किसी भी पॉइंट का शेयर स्ट्रेस लिखेंगे तो किसी भी पॉइंट का शेयर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू du बाई dy होता है, यानी कि म्यू v बाई h मिल गया। अब बेस्ट पार्ट ये है, लीनियर वेलोसिटी का बेस्ट पार्ट ये है कि टाउ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y। लीनियर वेलोसिटी का बेस्ट पार्ट यही है, टाउ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y। तो आप पूरे फ्लूइड में कोई भी पॉइंट ले लो, सभी पॉइंट का शेयर स्ट्रेस सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्लेट पर भी शेयर स्ट्रेस सेम आएगा। तो जैसे अगर आपको इंक्लाइंड प्लेन पे शेयर स्ट्रेस लिखना होता तो आप बोलते टाउ एट y इक्वल टू 0 बोलते। अगर आपको
प्लेट पे शेयर स्ट्रेस लिखना होता तो आप टाउ एट वाई इक्वल टू कैपिटल एच बोलते, मगर भैया यहाँ पे टाउ वाई का फंक्शन नहीं है तो सब जगह वॉल शेयर स्ट्रेस सेम आ जाएगा। इसका मतलब हमारी प्लेट पे जो वॉल शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो म्यू वी बाय एच लगेगा, और ऑब्वियसली पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि प्लेट की टेंडेंसी है नीचे जाने की। तो आप बोलेंगे वॉल शेयर स्ट्रेस ऑन द प्लेट सरफेस इज म्यू वी बाय एच। तो अगर प्लेट का हमें एरिया पता हो तो प्लेट का हमें ड्रैग फोर्स पता लग जाएगा, है ना। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लेट की टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, तो आपको याद हो मैं एक एग्जांपल देता हूं। बादल है, बादल से ओले गिर रहे हैं, अगर हमारे सर पे टकराएगा तो 3000 न्यूटन का फोर्स आएगा। तो मेरा दोस्त तो बेहोश हो गया था, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने हवा दी। जैसे जैसे ओले की वेलोसिटी बढ़ती है ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाती है। आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है। सो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पहले प्लेट रेस्ट पे थी, यानी कि प्लेट की वेलोसिटी थी 0 और W sin थीटा था नीचे की तरफ, तो W sin थीटा के कारण प्लेट एक्सेलरेट करेगी। मगर प्लेट एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स और W sin थीटा बराबर हो जाएंगे। तो वो वाली जो कंडीशन है, जब ड्रैग फोर्स और W sin थीटा बराबर हो गए, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो गई और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वही कंडीशन जो है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। तो म्यू वी ए बाय एच एम जी साइन थीटा। तो इससे आप v की वैल्यू यानी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को यहां कैसे यूज करोगे, इस क्वेश्चन को यहां वाले में ये में कैसे यूज करोगे, आप बोलोगे कि भैया जो छोटा ब्लॉक लटक रहा है ना, उस छोटे ब्लॉक के कारण एक टेंशन आएगी। मान लेते हैं पहले सब कुछ रेस्ट पे है, तो पहले सब कुछ रेस्ट पे होगा तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स तो 0 है, ऑयल के अंदर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस टेंशन के कारण जो ब्लॉक है वो ब्लॉक मूव करना चालू कर देगा। अब जैसे ही ब्लॉक मूव करेगा तो ये वाली लेयर तो नो स्लिप कंडीशन शो करेगी, ये वाली लेयर नो स्लिप कंडीशन शो करेगी। तो विद इन द फ्लूइड हमें एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, हम ब्लॉक पे ड्रैग फोर्स निकाल लेंगे। जब ड्रैग फोर्स टेंशन के बराबर हो जाएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। सो म्यू वी बाय एच इंटू ए इज इक्वल टू टेंशन। मगर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो ये दोनों ब्लॉक सेम रोप से टंगे हुए हैं, तो अगर इस ब्लॉक का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। मगर इस ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है ऊपर और mg लग रहा है नीचे, तो टेंशन इज इक्वल टू mg आ गया। तो आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यस और नो प्लीज बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह का सॉल्व। मैंने विस्कोसिटी पे लगभग 6 घंटे लगा के क्वेश्चंस कराए हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कम से कम 15, मतलब मैंने विस्कोसिटी और बाउंड्री लेयर पे काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, मोर देन 30-40 क्वेश्चंस कराए हैं सिर्फ इसी टॉपिक पे। 30 क्वेश्चंस तो होगा, तो आप एक बार उसको जरूर चेक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, विस्कोसिटी एंड बाउंड्री लेयर। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। बाकी और कैसा क्वेश्चन आता है, और मैंने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपके पास एक बेरिंग है, और बेरिंग के अंदर एक शाफ्ट है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी बनती है कि शाफ्ट को बाहर निकालना है, तो जब आप शाफ्ट को बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन बना लेते हैं फिगर का, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, ये आपके पास एक बेरिंग है, या स्लीव है, और स्लीव के अंदर एक शाफ्ट है, ठीक है। और शाफ्ट और स्लीव के बीच में जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद एन ऑयल। तो जब हम शाफ्ट को बाहर निकालेंगे विद अ कांस्टेंट स्पीड v, तो उसके लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, पावर कितना सप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है फोर्स लगाना क्यों पड़ेगा। हमें पता है कि जब हम शाफ्ट को बाहर की तरफ पुल करेंगे तो ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर तो नो स्लिप कंडीशन के कारण सेम वेलोसिटी के साथ मूव करना चालू कर देगी। सो दिस लेयर विल स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल V, है ना। बट ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑयल की, ये लेयर अभी भी रेस्ट पे है बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। सो भैया आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, इनके बीच में वेलोसिटी डिफरेंस आ गया तो आपको एक वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगा। तो आपको ऑयल में इस तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल मिल जाएगा। सो अगेन आप क्या बोलेंगे, अगेन आप बोलेंगे
at a distance y velocity is u which is v by h y, है ना। सो आप किसी भी पॉइंट का शेयर स्ट्रेस लिख देंगे म्यू du by dy यानी कि म्यू v by h, है ना, म्यू v by h। ये किसी भी पॉइंट का शेयर स्ट्रेस आ गया। इसका मतलब जब शाफ्ट बाहर जा रहा है तो शाफ्ट के सरफेस पे शेयर स्ट्रेस लगेगा पीछे की तरफ, तो शाफ्ट के हर पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस लग रहा है पीछे की तरफ, तो शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया ड्रैग फोर्स बन जाएगा। तो ड्रैग फोर्स कितनी आएगी, ड्रैग फोर्स आएगी शेयर स्ट्रेस यानी कि म्यू v by h इनटू एरिया, एरिया कितना आएगा 2 pi RL, ये ड्रैग फोर्स बन गया। तो ड्रैग फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा आगे की तरफ जो ड्रैग फोर्स को बैलेंस करेगा। फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर बन जाएगा। यस और नो, प्लीज डू लेट मी नो। आई थिंक ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन और बनता है सेम, मगर उसमें क्या होता है, उसमें शाफ्ट जो है वो बेयरिंग के अंदर रोटेट करता है। सेम प्रिंसिपल जो है वो रोटेटिंग सिलेंडर विस्कोमीटर का भी है। तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि भैया जब हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो शाफ्ट के साथ ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये भी सेम स्पीड के साथ मूव करेंगे, मगर ये वाली जो पार्टिकल्स हैं ये रेस्ट पे रहेंगे। तो विद इन द फ्लूइड देयर विल बी अ वेलोसिटी प्रोफाइल। तो वही वेलोसिटी प्रोफाइल आ गया। वॉल शेयर स्ट्रेस लिखेंगे, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया वो बन जाएगा फोर्स, मगर यहाँ पे टॉर्क की टर्म्स में काम करना पड़ेगा। तो इस ये वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और एक क्वेश्चन मैंने और भी कराया हुआ है जिसमें एक फ्लैट प्लेट है, तो फ्लैट प्लेट के ऊपर ऑयल की लेयर है, उसके अगेंस्ट हम एक डिस्क को प्रेस करते हैं और डिस्क को घुमाते हैं। तो डिस्क को घुमाने के लिए, कांस्टेंट स्पीड पे घुमाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, कितना पावर चाहिए। और मैं साथ में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराता होता हूँ कभी कभी, जैसे वो एक तो विस्कोमीटर वाला है ही, ये विस्कोमीटर का ही प्रिंसिपल है, मगर इसके इंप्रूव्ड वर्जन होते हैं। एक वो सीडी वाला क्वेश्चन है या फिर एक स्लेज वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो आप जरूर चेक कीजिए और इन क्वेश्चंस को मिस नहीं कीजिएगा। हाय रेडी, हाउ आर यू? सो रेडी, लेट टुडे? हाँ, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो रेडी, ऑलवेज रिमेंबर, सी, सो मेनी ऑफ यू आर many of the people who will watch the video later on also, जो लोग बाद में भी वीडियो देखेंगे। देखो पहले तो आप हो सकता है ना, आजकल तो क्या है, YouTube पे हमने सभी चैनल सब्सक्राइब कर रखे होते हैं, तो अच्छी बात है, अलग अलग जगह से कंटेंट मिल रहा है आपको। बट पहले ध्यान रखना है कि आपके करंट टीचर्स क्या हैं। तो आप पहले उन टीचर्स के साथ जो आपका कमिटमेंट है, आप वो सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए और बाद में अलग से वीडियो देखिए। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आज का वीडियो में मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास अलग क्लास है, तो डेफिनेटली ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो करंट क्लास प्लान्ड है ऑलरेडी एक टीचर के साथ, एक अकेडमी के साथ, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रखता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं जो बाद में वीडियो देखेंगे, जॉब वाले सारे के सारे, सुन लो, ध्यान से वीडियो देख लेना, तुम लोग छोड़ना मत, ठीक है, कंप्लीट करना वीडियो। ओके, सो दिस वाज अ लिटिल आइडिया अबाउट विस्कोसिटी। नाउ इन विस्कोसिटी देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज टाइप ऑफ फ्लूइड। क्या टॉपिक है? टाइप ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू रियोलॉजिकल बिहेवियर। किस बेसिस पे? रियोलॉजिकल बिहेवियर के बेसिस पे। सो कौन बताएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं? कौन बताएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं? कौन बताएगा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड क्या क्या होते हैं? जल्दी बताइए, प्लीज बी फास्ट, जल्दी से बताइए, प्लीज बी फास्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या क्या होते हैं? वैसे तो रियोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक, आप तरह तरह की टर्म सुनते हैं, मगर वो गेट सिलेबस का पार्ट नहीं है। गेट सिलेबस में हमें क्या ध्यान देना है? गेट सिलेबस में आप लोग, दरअसल गेट सिलेबस अगर चेक करना हो ना, कंफर्म करना हो, एनपीटीएल का वीडियो देख लो, सेंजल देख लो, ये दो बुक्स चीजें कंफर्म कर लो, आपको गेट सिलेबस पता लग जाता होता है। सो हम लोग क्या करते हैं? न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन में डिफाइन करते हैं। वेरी गुड ऋषभ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो वी डिफाइन द फ्लूइड्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटोनियन and non-Newtonian fluid. So guys, what happened is that when Newton was performing his experiment, tau is equal to mu du by dy. So his experiment proved to be very good. But as more and more research was done, it was found out that this law is not always true.
This law is not always true. So later on more research was done, and finally with the French guy Ostwald de Waal, a model came out which was called as power law model. So as per this model, tau is equal to A du by dy raised to power n plus b, where A is called as consistency index, n is called as flow behavior index, and b is called as yield stress. You will not require this name in GATE exam, but just for your knowledge, A means consistency index, n is flow behavior index, and B is yield stress. So this guy told us that not all fluids follow this law. So he gave a general formula for all the fluids, for most of the fluids. And B is called as yield stress. Now what we do, we define the fluids. We classify the fluids in different terms. Like a major classification is Newtonian and non-Newtonian fluid. So if there is a fluid, liquid and gas, so there will be a Newtonian fluid and there will be a non-Newtonian fluid. अभी मैं thixotropic, rheotropic वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो गेट सिलेबस का पार्ट नहीं है. Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. Okay. Now in non-Newtonian fluid there are further categories. So one is dilatant, other one is pseudoplastic, and the third one is Bingham substances. Pseudoplastic and Bingham substances. Now how do you classify them? Actually you classify them according to the value of N and B, not A, according to the value of N and B. Say for example, for Newtonian fluids, B value is equal to 0 and N value is equal to 1. For dilatants, B value is equal to 0 but N is greater than 1. For pseudoplastics, B is equal to 0, actually pure pseudoplastics. N is less than 1, pure dilatants and pure pseudoplastics. And for Bingham fluids, N can be anything, but B is not equal to 0. तो इस तरीके से आप N और B वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिफरेंट फ्लूइड्स को क्लासिफाई करते हैं. आओ चेक करते हैं. अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? वी विल हैव टू आइडेंटिफाई देयर मीनिंग फर्स्ट. Now say for example B value is equal to 0. So we will talk of first case. We will talk of case 1. So in case 1 B value is equal to 0 and N value is equal to 1. Okay. Now what is the general formula? General formula is tau equal to A du by dy raised to power N plus B. So I think when you will substitute these values, you will have A tau is equal to A du by dy. जैसे ही आप इन values को substitute करेंगे, you will get this relationship. Now guys, just compare this relationship with the Newtonian relationship. Newtonian relationship was tau is equal to mu du by dy. So what did Newton said? Newton said that tau is proportional to rate of shear strain. Tau is proportional to power 1 of rate of shear strain. Similarly here also tau is proportional to power 1 of rate of shear strain. So actually this formula is nothing but formula of Newton. That's why we call these fluids as Newtonian fluids. In fluids को आप क्या बोलते हैं? Newtonian fluids बोलते हैं. And what is the dynamic viscosity of Newtonian fluids? It is nothing but the consistency index. So dynamic viscosity is nothing but the consistency index of these fluids. ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? So इसका मीनिंग बहुत सिंपल है. If I draw
टाउ वर्सेस रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो सॉलिड में क्या करते हो, सॉलिड में आप बोलते हो कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू फाई, एंड इन सॉलिड्स यू मेक अ ग्राफ ऑफ टाउ वर्सेस फाई, दैट इज शेयर स्ट्रेस वर्सेस शेयर स्ट्रेन, है ना। नाउ हियर टाउ इज प्रोपोर्शनल टू फाई डॉट, दैट इज du by dy. So here we will make a graph of tau versus phi dot, tau versus du by dy. Now check, this is nothing but y is equal to mx, है ना। So y is tau and x is du by dy. So y equal to mx. So graph will go like this. But what is m? M is the slope of the graph. So tan theta, that is the slope of graph, it is m. So if you compare them, it is nothing but the consistency index or the dynamic viscosity. तो जब भी आप tau versus du by dy ग्राफ की बात करते हैं, so dynamic viscosity of the fluid is the slope of the graph. Dynamic viscosity of the fluid is the slope of the graph. Am I correct? Yes or no? Am I correct? Yes or no? Am I correct? Yes or no? And if it is yes, then which fluid will have more dynamic viscosity? 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 Please check, please do check. कौन से fluid का dynamic viscosity ज्यादा आएगा? I think the slope of graph B is more. So if the slope of graph B is more, dynamic viscosity will also be more. If the slope of the graph is more, dynamic viscosity will also be more. So this graph simply says mu B is greater than mu A. ठीक है ना? Now next we move on to the second case. So in case 2, your B value is equal to 0, but N value is greater than 1. So when you will write down the formula, tau will be equal to a du by dy raised to power n. Now the tau is not proportional to power 1 of du by dy. Tau is not proportional to power 1 of du by dy, but it is proportional to power n of du by dy. So this is non-Newtonian behavior. इसको क्या बोलेंगे? Non-Newtonian behavior, because as per Newton, tau is directly proportional to du by dy power 1. ठीक है ना? Now guys check. What I want to do is, I want to compare this formula with the tau equal to mu du by dy. I want to compare this formula with Newtonian fluids. So I think what I can do, whenever we have x cube, we can also write it as x square into x, है ना? So this will be 3 minus 1. Similarly here, tau is equal to a du by dy raised to power n minus 1 into du by dy, है ना? Now compare the two formulas, one for the non-Newtonian fluid and other for the Newtonian fluid. What is this? Shear stress, shear stress. What is this? Rate of shear strain, rate of shear strain. So what will be this? This is dynamic viscosity. So this is also dynamic viscosity. So for such fluids, dynamic viscosity is equal to consistency index into du by dy raised to power n minus 1. This is the dynamic viscosity of the second case. But when you talk of the dynamic viscosity of first case, for first case, dynamic viscosity is simply the consistency index. ये एक और difference है between case 1 and case 2. This is the second difference between case 1 and case 2. Okay. आदित्य बेटा thank you किस लिए? अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई बेटा. So if you are talking of this session, then there is no need to thank you, क्योंकि ये तो मेरा ड्यूटी है. जो स्टूडेंट मेरे पास ऑलरेडी पढ़ रहा है या जिसने मेरे साथ इस साल पढ़ाई की है, तो उसको मैं छोड़ थोड़ी ना सकता हूँ. उनका रिवीजन तो कराना ही है ना. ये तो बेटा मेरा ड्यूटी है, इसमें कोई थैंक यू करने की जरूरत नहीं है. जब मार्क्स आ जाएंगे, गेट स्कोर हो जाएगा क्लियर, तब हम देखेंगे. Okay, so guys, please check. I think you have got one more difference between case 1 and case 2. Now, in case 2, just have a look.
Dynamic viscosity depends upon the rate of shear strain. Rate of shear strain means how fast you are deforming the fluid. And I think n is greater than 1. If n is greater than 1, n minus 1 will be a positive term. This means, अच्छा लिपस्टिक वाला मुझे याद नहीं आ रहा है. क्या कुछ ध्यान तो है कि तूने एक बार क्वेश्चन पूछा था कुछ लिपस्टिक से रिलेटेड, मुझे याद नहीं है क्या क्वेश्चन था, ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को. एक मिनट देखते हैं. नाउ गाइस चेक. सो n इज ग्रेटर देन 1. दिस मीन्स n minus 1 is a positive term. So what is the meaning of this? The meaning of this is if du by dy is larger, so dynamic viscosity will be high. I think what they are trying to say, if du by dy is more, then dynamic viscosity will be more. If you deform the fluid at a faster rate, the dynamic viscosity of the fluid will be more. So the fluid will become thick. Shear thickening fluids. What do you call them? Shear thickening fluids. If you deform the fluid slowly, the dynamic viscosity will be less, fluid will be thin. If you deform the fluid fast, the dynamic viscosity will be more, the fluid will be thick. And the very best example is this. Let me show you the example. People jumping on dilatant. So let me show you a photo. अगर कुछ मिल जाता है. So guys, you might have seen this in videos, देखा होगा आपने. People running on some liquid and the liquid appears to be rubbery. So if they run on the liquid fast, they can easily run on it. But if they stand at one place or they walk slowly, they will drown. Have you observed this? ये कभी देखा है ना? I think you might have seen this in videos on YouTube, and YouTubers, they keep on doing stuff like this. So what they do, if they run on this liquid very fast, they will not sink, they will not drown. But if they walk slowly, they will drown fast. Why? Because when they are walking slowly, they are deforming the fluid slowly. If they are deforming the fluid slowly, du by dy will be less. Du by dy will be less, dynamic viscosity will be less, fluid will be thin. So viscous force is not sufficient to support your weight. But if you are walking fast, you are deforming the fluid fast. Basically they thump the fluid, so deform the fluid. So when you are running on the fluid, you are deforming the fluid at a faster rate. So du by dy will be more, dynamic viscosity will be more, fluid will be very thick, and it can easily support your weight. I hope आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, है ना? I hope आप लोगों ने ये चीज देखी होगी. So these shear thickening fluids, they are called as dilatants. And many times I tell you an experiment also, that in your kitchen you have cornstarch. So you take cornstarch and water in a ratio of 1:1 and mix them. And you mix them in a manner, मतलब कि उसमें कोई वो ना रह जाए, क्या बोलते हैं उसको, what do you call them, मतलब make a homogeneous mixture. I'm not lumps, so there should not be any lump formation. A homogeneous mixture should you should get a homogeneous mixture. Now keep that in a beaker, and what you do, you punch your liquid slowly. So when you will punch the liquid slowly, your hand will go inside the liquid and it will touch the floor. But if you punch it fast, what will observe? You will observe that the liquid behaves as a rubbery surface. Why? Because when you punch slowly, the rate of deformation is less. Du by dy is less, dynamic viscosity is less, fluid is thin, your hand will go inside. But when you punch fast,
rate of deformation is high, dynamic viscosity is high, fluid is thick and your hand will not go inside, fluid will appear as a rubber. So these are dilatants, and I have told many times, I have told you applications in Kevlar jackets and then automotive couplings. So these are useful applications of dilatants. बहुत सारी applications है dilatants की, ठीक है ना? Next category. But before moving on to the next category, I think I would write a difference. What is the difference? When I make a graph between dynamic viscosity versus du by dy, so for dilatants, when du by dy increases, dynamic viscosity also increases. This is for dilatants. But when I talk of what you say, Newtonian fluids, for Newtonian fluids it is a constant, it is only equal to consistency index. Yes or no? Yes or no? For Newtonian fluids it is equal to consistency index. For Newtonian fluids it is equal to consistency index, and for dilatants it is equal to A du by dy raised to power n minus 1. Right? Now please note, when du by dy increases, dynamic viscosity increases, and for the graph tau versus du by dy, अब आपको note करना है, there are two types of graph. There are two graphs. One is mu versus du by dy and the other one is tau versus du by dy. Tau versus du by dy, है ना? So when du by dy increases, the dynamic viscosity increases, but dynamic viscosity is the slope of this graph. So when du by dy increases, dynamic viscosity, that is the slope of the graph, also increases. So this is tau versus du by dy for dilatant. समझ आ गया? All of you, please do let me know. Please be fast. Please do let me know. Please be fast. Okay. Now case 3. Case 3. अच्छा हाँ, वो मैंने उस दिन बताया था, मैंने एक्चुअली चेक किया था ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है क्या था आंसर उसका, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था कि लिपस्टिक को इजीली आप सिर्फ एक लिक्विड नहीं कह सकते, वो एक मशी स्टेट है. अब मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. नाउ गाइस चेक case 3. So in case 3 what will happen? So by the way, what are the examples of dilatant? Quicksand is an example of dilatant. Your cornstarch mixture which you call as oobleck, that is the example of dilatant. Oil used in automotive couplings, that is an example of dilatant. So there are many examples of dilatants. शुगर सिरप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायलेटेंट, ठीक है ना? तो आप लोग चेक कीजिएगा, आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स बताए थे. नाउ इन केस 3 B is equal to 0 but N is less than 1. So when you will write the dynamic viscosity of that fluid, it will become A du by dy raised to power N, but N is less than 1. So when you talk of N minus 1, dynamic viscosity, when you talk of N minus 1, that will be 0, which is negative. So this power is a negative power. So let us make it as positive power. So positive power will be A du by dy raised to power 1 minus N. Now du by dy is in denominator. So when du by dy is in denominator with a positive power, so du by dy increases, dynamic viscosity decreases. So if you will deform the fluid at faster rate, the dynamic viscosity will be less, the fluid will become thin. So shear thinning fluids, and their name is pseudoplastic fluids. Pseudoplastic fluids. So milk, blood, these are good examples of pseudoplastic fluids. Good example of pseudoplastic fluids. Latex paint, pseudoplastic fluid. Cosmetic creams, ointments, pseudoplastic fluids. So what do you want? So when you put a lump of cosmetic cream on your arm, it spreads slowly, but when you push it with your hand, it moves very easily. Why? Because when you do not move your hand on it, so shear stress is less.
rate of deformation is less. Rate of deformation is only a result of gravitational force. Rate of deformation is less, dynamic viscosity is more, fluid is thick, it will spread slowly. But when you use your hand, your finger, rate of deformation is more, dynamic viscosity is less, the fluid will spread very easily and seep into the pores of your skins. तो जब भी हम ऑइंटमेंट बनाते हैं, जब भी हम कॉस्मेटिक क्रीम्स बनाते हैं, we make sure that these creams are pseudoplastic in nature. This is also very important when you are considering the manufacturing of the fluids. Manufacturing of dilatants become very easy because if the fluid will flow at a faster rate, the rate of deformation will be more and fluid will become thick. So friction forces will be high, power consumption will be more. But if you have a pseudoplastic fluid, manufacturing it is very easy because when the fluid will flow at high rate, viscosity will be less, it will be thin, power consumption will be less. तो ये एक इनके बीच में differences होते हैं, हालांकि आपको उतने लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है. Now, when we talk of the last case 4, so in case 4, whatever may be the value of n, we are more interested in b is not equal to 0. Now the question is, what do you mean by that? So for these fluids, the graph is not equal to y equal to mx, but it is y equal to mx plus c. So tau versus du by dy will go like this. What do you mean by this? Arey bhaiya, even when du by dy is 0, so rate of shear strain is 0. It doesn't mean that the total deformation is 0. It means that the final shape is constant. So there is no continuous deformation, but there is static deformation. So because of external stress, there is static deformation. So substance is behaving as a solid. But as the tau crosses value B, there is some continuous deformation. So substance is behaving as a fluid. तो ये जो tau value होती है, इसको yield stress बोलते हैं. So if the shear stress on the substance is less than yield stress, substance will behave as a solid, and if it is more than yield stress, it will behave as a fluid. I think we have seen the example of tomato ketchup, of jam also. So when you take jam, you can, when you take butter, warm butter, you can make a lump of it on the bread and it will not spread itself. So because of the weight of the butter, there is some internal shear stress, but that shear stress is very less. So deformation is static. But when you spread it with your knife, shear stress is more. Shear stress is more, the substance will easily spread and behave as a fluid. So ये आपके examples होते हैं Bingham fluid के. Jam, mayonnaise, butter, these are examples of Bingham substances. ठीक है ना? Now I hope you remember. So always whenever I discuss this topic, I give you this graph, mu versus du by dy. So for Newtonian fluid, it is a constant. For dilatant fluid, it will increase, and for pseudoplastic fluid, it will decrease. When you talk of tau versus du by dy, so graph will go in this manner. So graph for Newtonian fluid will go like this. For dilatant fluid, it will go like this. For pseudoplastic fluid, it will go like this. For Bingham fluid, it will go like this. Ideal fluid means zero dynamic viscosity. So at whatsoever rate you deform the fluid, there will be no internal shear stress. So this is ideal fluid. And ideal solid means it will always show a static deformation. So whatever may be the shear stress, it will only show static deformation. It will not show continuous deformation. So this is ideal solid. I hope सभी को ये क्वेश्चंस याद हैं. ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ग्राफ दिया जा सकता है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है? Guys, please do let me know, do I need to go deeper? I think in the revision session also I have revised sufficient amount of content. So please do let me know. अगर कोई doubt है, then we will repeat. Otherwise we will leave. We will move to the next topic. जल्दी से बताइए. Please do let me know. Please do let me know. Is that clear or not? Please do let me know. Is that clear or not? Is that clear? Now, nowadays,
one more question has come into picture. So what they tell you? They tell you, bhaiya, for a fluid, an experiment was performed, and during the experiment, tau versus phi dot data was observed. What was observed? Tau versus phi dot data was observed. So they will give you some values and they will ask you what kind of fluid is this. So what you will do, you will plot these points on the graph. If you will get a graph like this, it is dilatant. If you will get a graph like this, it is a Newtonian fluid. And if this is the graph, it is a pseudoplastic. If the graph will start from a non-zero point, then it is a Bingham substance. So this question can also be asked. ठीक है? अच्छा ठीक है. तो भविन एग्जाम्पल लिख लो बेटा. डायलेटेंट एग्जाम्पल लिख लो. डायलेटेंट. So the most important example is oobleck, which can be asked in your questions. Why this can be asked in your questions? Because it is nothing but cornstarch water mixture, and cornstarch is there in every kitchen. Cornstarch water mixture. Then you have oils in automotive coupling. Oils in automotive coupling. Oils in automotive coupling. Then you have this what you say, क्या बताया था? quicksand. ठीक है? Sugar syrups, a lot of sugar syrups, not all but a lot of sugar syrups, they are dilatants. Pseudoplastics, milk, blood, and what else? This one, latex paint, ointments, cosmetic creams like Vaseline body lotion, cosmetic creams. Then you have Bingham substances. Acha, one more important example is there, that is honey. So actually, whether honey is a dilatant, pseudoplastic or Newtonian, it depends upon the environment, that is the weather conditions. It depends upon the type of the bee and type of nectar. So in India, mostly honey is pseudoplastic. So if someone asks you honey, then you will write pseudoplastic, but it can be Newtonian also and dilatant also. In India, it is pseudoplastic. Most of the locations, not all locations, many locations. Bingham substances. So Bingham substances, you have butter, मेयोनेज, कोई भी ऐसी चीज जो लंप बनाए मगर अगर चाकू चलाओ तो इजिली स्प्रेड हो जाए. जैम, इफ द जैम इज वार्म देन, ठीक है. कोलगेट मतलब टूथपेस्ट. And in Newtonian fluid, air, water, SAE30 oil, most of the cooking oils, then diesel, kerosene, petrol, these are all Newtonian fluids. Air, water, diesel, kerosene, petrol, cooking oils, these are examples of Newtonian fluid. ठीक है? Okay, so guys, let us quickly go through surface tension. That is the last property. फटाफट से surface tension देख लेते हैं, जो कि last property है. और तेजा बेटा, with jelly ना I have a confusion. मतलब jelly I think is a semi-solid. It doesn't come under liquids. So jelly मैंने कभी खाई नहीं है तो मैं बता नहीं सकता. कभी आज खा के I will eat it today and then I will let you know. So today तो not possible because class will get over late. But tomorrow I will get a jelly, I will eat it and then let you know. बहुत easy है. You know what I will do? It's very easy. I will keep the jelly on the table. It is solid. So right now it is behaving as a solid. It is not spreading itself. So right now it is not a liquid. So only possibility is that it will become a Bingham substance.
Now, if I spread it with the knife and it easily spreads even at low forces, then it is a Bingham substance. But Bingham substance can have n greater than 1, can have n equal to 1, can have n less than 1. तो वो वाला मैं नहीं बता पाऊंगा, that I will not be able to check. हाँ, lipstick also I will check. I know why you want lipstick, है? So ठीक है. So people, we are from mechanical and civil, है ना? So majorly for mechanical. So diamond is loved by girls. So you should know the properties of diamond. And similarly, Bhavin also has an example. ठीक है. Chalo guys, let's move ahead. Let us quickly go through the important formulas of surface tension, important definition of surface tension. Then we will take a small break. We will not spend more than 15 minutes on this. We will take a break of 2-3 minutes and we will start with fluid statics. So fluid statics में जितने भी points हैं, those points we will write down. Okay? Now guys, check. Very easy. Very easy. First of all, there are two types of forces. So the forces are cohesive forces and adhesive forces. There are two types of molecular forces, cohesive forces and adhesive forces. So when I say cohesive and adhesive force, it's very simple. Let us take a mixture of two substances, maybe a mixture of two types of gases. So gas A and gas B. Now these are the molecules of gas A, these are the molecules of gas A, and these are the molecules of gas B. And we know molecules show intermolecular forces of attraction. So between A and A, which are like molecules, so between A and A, there will be a force of attraction. So this force of attraction will be called as cohesive force because similar molecules. Similarly, between B and B, there will be a force of attraction, cohesive force of attraction. But when you talk of A and B, they are different molecules. So force of attraction between unlike molecules, that is called as adhesive force. Okay? So there are two types of forces, cohesive force, adhesive force. Now what happens is, at the surface of the liquid, there is an imbalance in these forces, and because of imbalance of these forces, this effect comes into picture. सरफेस पे इन दो फोर्सेस में इम्बैलेंस आ जाता है और उसी इम्बैलेंस के कारण हमें सरफेस टेंशन इफेक्ट दिखाई देता है. Now let us see for example how. So if you want to write down, you can write like this. Cohesive means between like molecules, same molecules, and adhesive means between unlike molecules. That's why on the box of Fevicol it is written as adhesive bonding. Adhesive means molecules of Fevicol will easily stick with the molecules of the wood. The wood and Fevicol are different kind of molecules. So when we talk of surface tension, let us suppose that this is surface of water, top surface of water, just like given in every book. S.K. Som Sahab ka kitab utha lo, D.S. Kumar utha lo. If you will take any book, the same explanation is given, which I am going through. So I have copied the explanation from there only, you can say. Okay? Now what we have? We have a molecule of water which is somewhere here. Now what is the size of molecule? Size of molecule is like 10 raised to power minus 10 meter. 1 by 10,000 times smaller than micrometer. Very small, extremely small. And this molecule is surrounded by remaining water molecules. Now these remaining water molecules, they will apply forces of attraction. Please note, these forces of attraction are visible only when two molecules have this much distance. If the distance between molecules is large, like 10 raised to power minus 8 meter, which is even smaller than a micrometer, ये भी micrometer से छोटा है, मगर अगर दो molecules के बीच में इतना distance हो गया, या 10 raised to power minus 9 meter भी हो गया, तो हमें ये forces दिखाई नहीं देंगी. These forces are visible only when the distance between the molecules is of this much order. If the distance is even slightly larger, we cannot see any force. So this molecule is surrounded by remaining molecules and remaining molecules will pull it. But I think it will be uniformly pulled in all directions. So net force on this molecule is 0. Now guys, please let me know
what kind of forces are these? Are these cohesive forces or adhesive forces? Please do let me know. ये कौन सी force है? Adhesive force है या cohesive force है? What are these forces? Cohesive forces or adhesive forces? Please do let me know. Please be quick. Please do let me know. क्या नाम है? Cohesive forces. Very good. Cohesive forces. Rishabh beta, if you are there in your class ना, I had not done surface tension. तो मैंने सरफेस टेंशन का बाद में एक वीडियो बनाया था और ना लिंक शेयर किया था, तो अगर वो लिंक ना देखा हो तो यहां से रिवाइज कर लो, यहां से चेक कर लो और एक बार वो वीडियो गो थ्रू जरूर कर लो, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। वैसे मैंने शेयर की थी आप लोगों के ग्रुप पे, पर मुझे पता नहीं है कि किसने देखी है। नाउ गाइस चेक, सो वाटर molecule is surrounded by other molecules and they will apply cohesive forces on them, but the cohesive forces will get balanced out. Now let me consider a molecule which is at the top surface. Now this molecule is surrounded by water molecules at the bottom and it is surrounded by air molecules at the top. So I think these forces are called as adhesive forces because force between water and air, and these forces will be called as cohesive forces because force between water and water molecules. Obviously you can see that white color arrows are very small. Why the white color arrows are very small? Anyone please be quick. कौन बताएगा white color arrow smaller क्यों है? Why is the white color arrow comparatively small? Please be fast. Please do let me know. Why is the white color arrow comparatively small? Because air gases are very less than dense. Water is like 1000 kg per meter cube. Air is like 1 kg per meter cube. So density of air is very less. So molecular distances are large. So forces are very weak. So very good. So forces applied by gas molecules are weak. So I hope you can see that these forces are smaller. These forces are larger. So as a result, there will be an inward force on the molecule on surface. So when we are talking on surface molecules, there is an inward force on the molecules of at the surface. Now guys, just imagine a balloon which is filled with air. So I think the molecules of the balloon, they are in stretched condition, and the molecules of the balloon, they try to come inside. So if the molecules of balloon are allowed to come inside, they will become tension free. The balloon will become tension free. But since the balloon is already filled with air, the molecules of balloon material cannot come inside and the balloon material remains in tension. Similarly, the surface molecules, they want to come inside, but they cannot come inside because that space is already occupied by other molecules. So surface will come under tension. So what will happen if you will consider, the top surface, and on top surface you will draw a line. You can observe tension force on this line. So what is happening? The inner molecule, the molecules at the surface, they tend to go inwards because of imbalance of cohesive and adhesive force. तो उस फोर्स के imbalance के कारण the surface behaves as a stretched membrane. This phenomena is called as surface tension. Imbalance of adhesive and cohesive forces on the surface molecules makes the molecules tend to move inwards, but they cannot do so. So the surface will behave as a stretched membrane. So if you will draw a line on the water surface, you will observe a tensile force on the surface. So tensile force on the surface per unit length of the line, that is called as surface tension.
लाइन वाला मैं समझा दूं, ठीक है। देखो बहुत आसान है। सो हमें क्या करना है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मगर मॉलिक्यूल्स अंदर जा नहीं पाते, तो आपका जो सरफेस है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। यही फिनोमिना सरफेस टेंशन है। मगर इस सरफेस टेंशन को क्वांटिफाई कैसे करेंगे? सो टू क्वांटिफाई दैट, व्हाट यू विल डू, you will draw a line on the water surface. So there basically this line represents molecules. What does this line represents? Molecules, imaginary line. Okay, now these molecules, they will tend to pull the molecules. These molecules also, they will tend to pull the molecules. So tensile force per unit length, that will be called as surface tension. Now please note that your membrane, your surface is actually in stretched condition. It is in tension, it is in strain. So in the surface there will be a strain energy. So surface tension can also be defined as strain energy per unit area. ठीक है ना? इसको बहुत सिंपल रखो, बिल्कुल भी डीप जाने की जरूरत नहीं है सरफेस टेंशन में, क्योंकि सरफेस टेंशन में थोड़ा सा भी डीप जाओगे ना तो आप कंफ्यूज होने लग जाओगे। अभी आप इसको ऐसे ही देखो कि यार अगर हम सरफेस टेंशन का मतलब है कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस दे आर imbalanced. So there is an imbalance of cohesive and adhesive force. So because of the imbalance, the surface will behave as a stretched membrane, and as a result, surface tension will come into picture. How to quantify surface tension? You draw a line on the surface. So tensile force per unit length, that will be surface tension. The surface is in stretched condition. So there will be a strain energy in the surface. So strain energy per unit area, that will also become surface tension. ठीक है? वैसे तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जा सकता हूँ, बट उससे ना कोई फायदा नहीं होगा, उससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. सो हेलो राघवेंद्र, हाउ आर यू? आई होप द प्रिपरेशन इज गोइंग वेल, and please do ask me any kind of doubt if it is there. I will definitely try to clear it out. ठीक है? So purpose for today's class is to have a revision of some chapters of fluid mechanics. So we have discussed the important properties. We have discussed boundary layer also. After this surface tension, we will move on to fluid statics. Now guys, check. Please check. So surface is behaving as a stretched membrane, and as a result there will be a curvature in the surface. So what happens that if you put a tube in water, if you will put a tube in water, you will observe that water will take a shape like this. Water will take a shape like this. इस तरह से shape ले लेता है पानी. ठीक है? ये सरफेस टेंशन के कारण ही हो रहा है. किसके कारण हो रहा है? सरफेस टेंशन के कारण ही हो रहा है. अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद टू मीडियम्स. वन इज ग्लास ऑफ द ट्यूब, वन इज एयर. So please don't compare it with the other case. I mean, what you will try to say? You will try to say कि sir, when we have the molecules and the molecules are trying to go inwards, the surface will become convex. The surface will become convex. But now you are showing a concave surface, है ना? Now you are showing a concave surface. This is concavity. Why I am showing concavity? Because the glass has also come into picture. क्या चीज पिक्चर में आ गई है? ग्लास पिक्चर में आ गया है. ठीक है? But one thing is for sure, that surface of the fluid is concave or convex because of surface tension. What is surface tension? Imbalance of cohesive and adhesive forces. Now let us write down some consequences of this. Consequences of surface tension. Let us write down consequences of surface tension. So important points related to surface tension. So first important point is wetting and non-wetting fluid. पहला important point क्या है? Wetting and non-wetting fluid. Guys, I know this might be a little problematic to you because I will not explain it in detail. अभी मैं इसको बस रिवाइज करूंगा important formulas, मगर इनके पीछे का जो molecular explanation है वो नहीं मैं बताने वाला, to save my time. So what we have a solid surface. On the solid surface, we have two fluids. One is a drop of water and other one is a drop of mercury. So this is the drop of water and this is the drop of mercury.
Now, I hope you can observe there are two different shapes of the drops. And these shapes can be defined by a term called as contact angle. So what I will do, I will draw a tangent like this. So this tangent is making an angle. This tangent is making an angle. This angle is called as contact angle. And definitely for mercury, the contact angle is positive and obtuse. And for water, the contact angle is acute. So who will explain what is the reason for this? कौन बताएगा इसका reason क्या है? What is the reason for this? For mercury, the contact angle is obtuse, and for water, the contact angle is acute. कौन बताएगा इसका reason? जल्दी से बताइए. Please be quick. Please be quick. So mercury is highly dense. Mercury molecules are very close to one another. So cohesive forces between mercury molecules are very large. Now in this case, there are two important substances. One is the ground, that is maybe a glass, and the other one is the mercury. So between mercury and mercury molecules, there will be a cohesive force. Between mercury and wall, there will be an adhesive force. So if you take a mercury molecule over here, this mercury molecule somewhere here, this mercury molecule will be attracted towards other molecules of mercury. This is cohesive force. And this mercury molecule will be attracted towards walls also. This is adhesive force. Now in this case, cohesive forces are much stronger as compared to adhesive forces. So molecules try to move inwards and they take a spherical shape. But if you take a water molecule over here, this will become the cohesive force, this will become the adhesive force. In case of water molecules, the adhesive force with the ground, with the solid is larger. So water molecules tend to stick to the surface and they tend to become flat. ये डिफरेंस है, ठीक है ना, ये डिफरेंस है, बहुत आसान है. मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू द फोर्स विद द वॉल. So mercury molecules tend to move inwards. They take a spherical shape. But in case of water molecules, the adhesive force with the wall is stronger. So water molecules stick with the water surface and the drop tends to become flat. So ये difference है. So mercury molecules, they move inwards. They do not stick with the surface. That's why Bhavin is calling this as, Rishabh is calling this as non-wetting fluid. It is calling it as, they are calling it as non-wetting fluid. And they are calling water as wetting fluid because it will stick with the solid surface. ठीक है ना? Now the next important point is capillary rise or fall. So what do you say? You will say कि if we will dip a tube in water, so in water, if we will dip a open tube in water, within the tube the water will rise up, and this rise H is equal to 4 sigma cos theta by rho GD. If we dip a same tube in mercury, within the tube the mercury will fall down. And how much the mercury will fall down? That is also given by same formula, 4 sigma cos theta by rho GD. ठीक है ना? 4 sigma cos theta by rho GD. This is the case in mercury and this is the case in water. So it is called as capillary rise or fall. Capillary का मतलब है छोटा सा पतला tube which is open from both the sides. Capillary rise or fall. Capillary rise or fall. Okay. Now please note, जब मैंने सरफेस टेंशन का प्रॉपर वीडियो कराया था, so I gave 2 extra questions also. What was the extra question? There is a cylinder inside the cylinder. So this is the inner cylinder and this is the outer cylinder.
So this space is filled with water. So this is a tube actually. This is an annular tube. So this space is filled with water. So I gave a question, find out the rise of water in the annular space. And I gave one more question that let us suppose there is a rectangular slit and this rectangular slit is dipped in water. Then how much will be the water rise in the slit? तो ये आपको मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एक एनुलर ट्यूब है, उस ट्यूब को पानी में डिप करते हैं तो कैपिलरी राइज कितना होगा, और एक रेक्टेंगुलर ट्यूब है उसको पानी में डिप करेंगे तो कितना राइज होगा. तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर चेक कर लेना. सरफेस टेंशन के वीडियो में भी सॉल्व करके दिखाया है. ठीक है, प्लीज डू चेक इट. अभी मैं सरफेस टेंशन को बहुत क्विकली गो थ्रू कर रहा हूं, बिल्कुल भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और गेट में इससे क्वेश्चन आया नहीं है, आज तक नहीं आया है. सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, एक सिविल में एक मैकेनिकल में, जहां तक मुझे याद है. नाउ लेट्स चेक थर्ड consequence of this. So the third consequence is that because of surface tension, if you take a liquid surface, then across the liquid surface the pressure is slightly different. So P1 is going to be higher than P2. So pressure on the convex side, the pressure on the concave side is more. Pressure on the concave side is more. So this is the concave side na, so pressure on this side will be more. And how do you write this? Actually the correct formula is P1 minus P2. The correct formula is sigma 1 by R1 plus 1 by R2. ये करेक्ट फॉर्मूला होता है, मगर इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है. सो आई हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला इन दैट वीडियो एंड आई हैव आल्सो शोड हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला to find out the pressure difference between the inside and outside of a water drop. So let us say the pressure inside water drop is Pi, pressure outside water drop is P naught. So Pi minus P naught, this will be equal to 4 sigma by D. I have also shown that let us suppose there is a soap bubble. Let us suppose there is a soap bubble. So this is a soap bubble. So inside pressure is Pi, outside pressure is P naught. So Pi minus P naught, that will become double 8 sigma by D. Why? Because there are two surfaces. And similarly, if you have a liquid jet, inside the liquid jet pressure is Pi, outside the liquid jet pressure is P naught. So Pi minus P naught is equal to 2 sigma by D. Okay. So actually it's like for every spherical surface the pressure difference is 4 sigma by D. Now there are two surfaces, so total difference will be 8 sigma by D. ऐसा होता है. ठीक है, तो ये मैंने सरफेस टेंशन के वीडियो में प्रूफ भी किया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. सरफेस टेंशन को मैं बहुत इलैबोरेटरी नहीं कर रहा हूं जैसे हमने बाकी टॉपिक्स किए हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर गेट एग्जाम. बट फिर भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए, और स्पेसिफिकली अगर वीडियो देखना है तो सेम चैनल पे आप सरफेस टेंशन नाम का वीडियो देख सकते हैं. आई हैव रिकॉर्डेड अ 2 or 2.5 hour सेशन वेयर यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, is that clear to everyone? Please do let me know. Is that clear? Please do let me know. Is that clear? क्या क्या करना है, और आप ये 2 क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, कहीं बाई चांस पूछ लिया गया तो दिक्कत हो जाएगी. ये 2 क्वेश्चन जरूर देख लेना. ये एस.के. सोम साहब की किताब में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और मैंने भी सॉल्व किया हुआ है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. क्लियर? ओके, ठीक है. So let's move on to the second part. We will take a break of 2-3 minutes. We will take a break of 2-3 minutes and we will start the chapter 2 discussion, which is fluid statics. We will start chapter 2 discussion, which is fluid statics. Actually, we have already discussed a good portion of boundary layer. So that is a good thing with us. So fluid statics में I think it will take around 1.5 hour to 2 hour at max and we will be done with it. फिर 4-5 मिनट का ब्रेक लेके we will discuss fluid kinematics. ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, जितना आज कवर हो जाएगा उतना बढ़िया, and remaining things we will keep on discussing side by side. So tomorrow and day after tomorrow I cannot have a class because already there are sessions planned. But from 29th I will start the remaining chapters. तो एक ब्रेक ले लो और 2-3 मिनट में चालू करते हैं. आई विल ऑल्सो गो टू वॉशरूम वंस एंड गेट सम वाटर फॉर मी ऑल्सो.
एक बार वॉशरूम भी होते हैं और पानी वानी भी पियाते हैं और फिर चालू करते हैं. टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 minutes and we will continue. Thank you. I'll be back within a few minutes. So guys, I'm back. I hope you guys are back. Please do let me know. So I hope you can realize how big this subject is. और देखा जाए तो ये सब्जेक्ट की स्टार्टिंग ही है. आप समझ रहे हैं ना? Actually, this subject is very big. Fluid mechanics is the biggest subject of entire engineering. It is the toughest and biggest subject of entire engineering, and it has applications in all the fields. So day before yesterday also I gave an information that NPTEL has launched a new course, Fluid Mechanics for Astrophysics. तो जो लोग भी बिग बैंग थ्योरी देखते हैं उसमें राजेश कुत्रपल्ली was astrophysicist, right? है ना? So these guys also use fluid mechanics for them. समझ रहे हैं आप?
तो ये बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है, एंड इट्स एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग। एप्लीकेशन इन डिफेंस तो आपको पता ही है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी डिफेंस में, फाइटर जेट डिजाइन, डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, शिप्स, मिसाइल्स, बुलेट्स, कोई भी चीज ले लो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर प्रोडक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, lifestyle is a result of fluid mechanics, construction is a result of fluid mechanics, heat convection, that is cooking of food or drying of clothes or supply of water to the buildings. In fact, hydraulics in your what you say entertainment, क्या होता है यार वो, where you go for roller coaster ride and all that stuff. So those things are all Apu Ghar, SL World, they have huge applications of hydraulics. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सब जगह ऑटोमोबाइल्स, हर जगह फ्लूइड चाहिए। ठीक है, सो shall we start with the second part? So it's like, if you divide fluid mechanics in terms of theory and application, so there are three major portions. First one is introduction, then second one is statics, and third one is kinematics plus dynamics plus boundary layer. So introduction and statics are the bigger one, and boundary layer we have already covered kind of, and then application part will be left majorly. So application part में flow through pipes आएगा, turbines and pumps आएगा। हाँ, worlds of wonder नोएडा, जैसे worlds of wonder है नोएडा है, तो उसमें रोलर कोस्टर वगैरह होता है ना, उनको हाइड्रोलिकली पावर करते हैं अगर वो हैवी होते हैं, फिर मोटर से नहीं चलाते हैं, उनकी ब्रेक्स तो वैसे ही हाइड्रोलिक्स पे बेस्ड होती है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फ्लूइड स्टैटिक्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर, in fluid statics we solve those problems where the fluid is at rest, है ना? So we try to design a ship, we try to make a ship float, we try to understand the layout of the ship, that is buoyancy and stability, we try to design a dam, so we need to calculate how much force will be applied by water on the surface of the dam, that is hydrostatic forces. We try to design the pressure measurement devices, because pressure measurement device is a very important part of forging machines, forming machines, injection molding machines. So इस तरीके से, so any kind of hydraulic operated machine you need a pressure measurement device. So fluid statics is an important chapter. All these applications, they come from fluid statics. So from exam point of view, if you want to write down what is the part of the chapter, so in this chapter, first of all, you should know Pascal's law. Very easy, very small topic. Once you know Pascal's law will tell you that pressure is a scalar term. Once you know Pascal's law, question is how to find out the value of pressure. That comes from hydrostatic law. Once you know hydrostatic law, you can find out pressure at any point within a fluid at rest. And once you know hydrostatic law, we will try to find out how the pressure varies in atmosphere with elevation. So pressure variation in atmosphere. Now in fluid mechanics, most of the times, 99% times, we use a term that is gauge pressure. So we will understand what is gauge pressure and vacuum. क्या understand करेंगे? Gauge pressure and vacuum consider करेंगे. Gauge pressure and vacuum pressure. Gauge pressure and vacuum condition. Okay? And once you are through this, मतलब इससे ये वाली पार्ट्स हो जाएंगे. So we will talk about pressure measurement devices. Pressure measurement devices, that is manometers. So sometimes time allows, so I tell about Borden tube gauge also, dead weight tester or pressure transducer, but since we are focusing on revision of GATE exam, so we will talk about only manometers.
Once we are done with pressure measurement, once we know what is the value of pressure, once we know how to measure pressure, so pressure means force per unit area. So we will try to calculate the pressure force on a surface. Hydrostatic force on a submerged surface. Hydrostatic force on a submerged surface. And within this concept, we also get the definition of buoyancy. So we will talk about the next topic, that is buoyancy and stability. Buoyancy and stability. Please note, in buoyancy there is a term metacentric height. So in GATE exam, metacentric height is not a part of syllabus, but in IES, ISRO, DRDO, you will require metacentric height, especially for mechanical people. GATE exam में civil में भी और mechanical में भी metacentric height is not a part of GATE syllabus, but it is a part of syllabus of other exams. And in the last we will talk about liquids in relative equilibrium. So कोशिश करते हैं 2 घंटे में इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं. So right now it is 6 o'clock. Let us try to revise it by 8 o'clock. ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं. And we will also have a look of at least 1 or 2 type of questions in every case. So question को solve करके नहीं देखेंगे, but we will look at the type of question in every case. Now the very first part, that is Pascal's law. So who will tell me what is Pascal's law? Who is going to tell me what is Pascal's law? Who is going to tell me what is Pascal's law? जल्दी से बताइए, please be fast. Please be fast. Till then I will also write down the definition. What is Pascal's law? Please be quick. Very good. So the Bhavin's statement is totally correct. For a fluid at rest, pressure at a point is same in all directions. So what Bhavin is telling me, let us suppose, sir, there is a solid at rest. So if you will consider a solid at rest, and you will take a point inside the solid, and let us draw different planes passing through the point. So there will be a horizontal plane, there will be a vertical plane, and there will be an inclined plane, I. Now if we will use the free body diagram concept, we will find out that on the horizontal plane there is a compressive stress. So normal stress is negative and the shear stress is 0. This is the condition for horizontal plane. The same thing which I told in introduction also. Similarly, if we will take a vertical plane, we will find out that normal stress is also 0 and shear stress is also 0. But if you will take an inclined plane, the normal stress will be sigma theta and shear stress will be tau theta. So what do you mean by this? We mean by this that different planes have different values of normal stress. But if you talk of fluid at rest, for fluid at rest, so when a fluid is at rest, I think in case of fluids, tau is proportional to phi dot. So what do you mean by rest? Rest means phi dot is equal to 0 because the final shape is constant. If phi dot is equal to 0, tau value is equal to 0. On every plane, tau value will be equal to 0. So let us suppose this is a container. In the container we have some water. And let me take a point over here. यहाँ पर point लेंगे. So what I will do? I will draw a horizontal plane, I will draw a vertical plane and an inclined plane. So if I will do the free body diagram analysis, I will find out that the normal stress on each plane is compressive and equal also.
Normal stress on each plane is compressive and equal also. Why? What is the reason? Because tau is equal to 0. फ्लूइड एट रेस्ट में क्या होता है, टाउ वैल्यू जो है 0 होती है. तो इन सभी प्लेन्स में जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, एक तो वो कंप्रेसिव आएगा और उसकी वैल्यू भी बराबर होगी. तो उस कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम बोलते हैं प्रेशर. क्या बोलते हैं? प्रेशर. सो व्हाट यू विल से, pressure on all the planes is equal. Pressure on all the planes is equal. Now let us suppose this is x direction, this is y direction, and this is z direction. So when you are talking of pressure on horizontal plane, so pressure on horizontal plane means pressure along x. Vertical plane. When you are talking of vertical plane means pressure along x. When you are talking of horizontal plane, it means pressure along y, and so on. ठीक है ना? So you can say pressure on all the planes is equal. That is, pressure in all directions is equal. Pressure along x is equal to pressure along y is equal to pressure along theta. It is also equal to pressure along z. So this is your Pascal's law. ये कौन सा law है? पास्कल्स लॉ है. देखो, इसको प्रूव भी कर सकते हैं मगर उसकी जरूरत नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है. ठीक है? So the idea is very simple. At a point in a fluid at rest, the pressure along x direction is px. Pressure along y direction is py. Pressure along z direction is pz. All these pressure values are equal. बस यही हमारा आइडिया है. बट इसमें एक कमी है. Who would like to tell me what is missing point? Who would like to tell me what is the missing point? Any idea? Please be quick. Who would like to tell me what is the missing point? Any idea? Any idea? What is the missing point over here? Any idea? What is the missing point over here? Any idea what is the missing point over here? Guys, the missing point is, it is not necessary whether the fluid is at rest or not. For Pascal's law to be applicable, it is not necessary whether the fluid is at rest or not. What is the necessary condition? The necessary condition is tau is equal to 0. What is the necessary condition? Tau is equal to 0. Shear stress on all the planes must be equal to 0. Now, what do you mean by tau? So, if we have a Newtonian fluid, tau means mu du by dy equal to 0. So, either mu equal to 0 or du by dy equal to 0. That is rate of shear strain equal to 0. Yes or no? Yes or no? Am I correct? या तो dynamic viscosity 0 हो या du by dy 0 हो. Either dynamic viscosity is 0 or du by dy is 0. Please do let me know. Am I correct? Am I correct? Now have a look at these cases. Have a look at these cases. This is case 1. This is case 1. So what we have an ideal fluid. If we are talking of ideal fluid means something whose dynamic viscosity is 0. If the ideal fluid is at rest, then bhaiya, very easy. When the ideal fluid is at rest, the shape of the fluid is constant with the time. Dynamic viscosity is also 0. Phi dot value is 0. So tau is equal to 0 into 0. No problem at all. Pascal's law is applicable. But let me say, ideal fluid is moving through a converging pipe. If the ideal fluid is moving through a converging pipe, let me take a water element whose initial shape was this. So when the water element will move ahead, its shape will change a little, and when the water element will move further ahead, its shape will change more. So I think the shape of fluid is changing with the time. So what do you say? How much is the phi dot value? Is the phi dot value 0 or non-zero? Is the phi dot value 0 or non-zero? Is the phi dot value 0 or non-zero? Please be quick. Please do let me know. Is the phi dot value 0 or non-zero? जल्दी से बताइए. जल्दी से बताइए. Is the phi dot value 0 or non-zero? Is the phi dot value 0 or non-zero? I think phi dot value is non-zero because the shape of fluid is changing with time.
However, the fluid is ideal. So if the fluid is ideal, dynamic viscosity is 0. So when you talk of tau, tau is equal to mu into du by dy. So this term is not equal to 0, but this term is 0. So tau is again 0. So here also Pascal's law is applicable. So if you will take a point, pressure at the point is same in all directions, even though the fluid is moving. ठीक है ना? Similarly, let me now consider non-ideal fluid, viscous fluid. Let me consider a viscous fluid. Let me consider a viscous fluid. ठीक है जी? Now, say for example, if the viscous fluid is at rest, guys, just a minute. So case 2, we are talking of viscous fluid now, case 2. We are talking of viscous fluid now, case 2. So if the viscous fluid is at rest, then no problem at all. So phi dot will be 0. If phi dot is equal to 0, again tau will be 0. Pascal's law is applicable. When we are talking of a fluid moving as a rigid body, viscous fluid moving as a rigid body. So rigid body means that there is a container, it is closed, it is completely filled with the viscous fluid and it is moving ahead. So moving as a rigid body, So there is a container, it is completely closed, completely filled with the liquid. So container is moving ahead. So when the container will move ahead, liquid will move along with it, but the shape of liquid will remain constant. So here also phi dot is equal to 0. Again tau will be equal to 0. Pascal's law will be applicable. ठीक है ना? But if you are talking of this case, then what will happen? Phi dot value will be non-zero. Tau will be non-zero. Pascal's law will not be applicable. Is not applicable. ठीक है ना? So ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि Pascal's law is applicable in all those cases except for this one. इस केस में applicable नहीं है, मगर ये बाकी सभी cases में applicable है. Ideal fluid at rest or moving, viscous fluid at rest or moving as a rigid body. Now this last condition is also called as liquid in relative equilibrium. Liquid in relative equilibrium. So guys, please check. Now, your concept of what is fluid and Pascal's law, they can combine in form of MSQ question. So they can ask like this. For a fluid at rest, for a fluid moving as a rigid body, Pascal's law is applicable. Yes. For a fluid moving as rigid body, the most stress circle is a point on negative normal axis. Yes. है ना? So multiple answers are correct. So please remember, if your fundas are good enough, you will not face any problem in any question, whether objective, whether numerical answer type, whether MSQ. कोई problem नहीं आने वाला. आपका बस fundamental clear होना चाहिए. आपने पहला ऑप्शन पढ़ना है, सही है तो yes, wrong है तो no, बस बात खत्म. ठीक है ना? Now guys, please check. Let me ask you a question. What I have is, so this is a question only, okay? Question है. What I have is, I have a pipe and within the pipe, the fluid, a viscous fluid is moving. Pascal's law will be applicable or not? I have a pipe and a viscous fluid is moving through the pipe. Pascal's law will be applicable or not? So Rishabh, Avinash, Teja, Raghavinder, Bhavin, all the people who are watching the video, please do let me know. A viscous fluid is moving through a pipe of uniform cross section. Will the Pascal's law be applicable or not? Will the Pascal's law be applicable or not? Will the Pascal's law be applicable or not?
will the Pascal's law be applicable or not? Please do let me know. अरे यार आंसर नहीं दे रहे हो, बहुत आसान है. See, it's very easy. We know as the water will enter the pipe, there will be a formation of boundary layer. There will be a formation of boundary layer. So within the boundary layer, different particles are moving with the different velocities. So tau is not equal to 0, but outside free stream all particles are moving with same velocity, so tau is equal to 0. तो free stream region में tau 0 होता है, boundary layer में tau non-zero होता है. So here Pascal's law is not applicable, but here Pascal's law is applicable. Pascal's law is applicable in the free stream but not applicable in the boundary layer. Ready beta. Boundary layer formation, if the fluid is viscous in nature, boundary layer formation will happen. And what do you mean by boundary layer? Boundary layer means this particle is moving at higher speed, this particle is moving slowly, this particle is moving slowly. So check for yourself. Initially the lines are perpendicular, after some time the line will be inclined at 60 degree, then after some time line will be inclined at 30 degree. So the shape of the fluid is changing. What is happening? Shape of the fluid is changing. Yes or no? Yes or no? All of you, please do let me know. Am I correct or not? Am I correct or not? Pascal's law applicable in free stream and Pascal's law not applicable in boundary layer. Please check. So Teja says yes. What about Rishabh, Bhavin? Rishabh, Bhavin, beta, not applicable in boundary layer but applicable in free stream. Not applicable in boundary layer but applicable in free stream. खुद ही सोचो, when two particles are moving at different velocities. So this particle is moving in this direction with a velocity of 10 meter per second. This particle is moving in this direction with a velocity of 1 meter per second. So body will deform. समझ रहे ना? When different particles move with different velocities, the body deforms. This is what happens in boundary layer also. And if the body deforms, there will be a rate of shear strain. So phi dot is non-zero, tau is non-zero. ठीक है, ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं. चलो ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं, बट डाउट हो so please do ask me. Now this statement tells us that pressure is a scalar quantity. Pascal's law says that pressure is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Pressure is a scalar quantity. Why pressure is a scalar quantity? Because at a point pressure is same in all directions. Pressure is same in all directions. Suppose there is a force of 10 Newton which acts along 30 degree to the horizontal. So what you will say? You will say the force along horizontal is 5 Newton and force along vertical it is 5 sine 30, that is 5 root 3 Newton. So force is different in different directions. So you will say if you are talking about 5 Newton, you are talking of horizontal direction. If you are talking of 5 root 3, you are talking of vertical direction. But pressure is same in all directions. So value of pressure has no specific direction. So pressure is a scalar term. कैसा है pressure? Scalar term है. ठीक है ना? So these are the conclusions of Pascal's law. Let us move on to the next law. Let us move on to the next law. Guys, बोर तो नहीं हो गए? चलो एक काम करते हैं, 8 बजे तक का ही सेशन रखते हैं ताकि आप लोग भी थक ना जाओ. ठीक है ना? मेरे को भी लगता है मैं भी बैठे बैठे थोड़ा सा मेरे गले में दर्द होने लग गया है, पर बोर नहीं होना, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर हम ढंग से रिवाइज कर लेंगे तो अब आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैंने पहले ही बताया ना, आप अपने रिटर्न नोट्स बना लो, और अभी ये जो रिटर्न नोट्स बन रहे हैं इन्हीं रिटर्न नोट्स को आप 20 तारीख को रिवाइज करना, और फिर सेम रिटर्न नोट्स को आप 10 तारीख को देख लेना. दैट वुड बी टोटली सफिशिएंट. एग्जाम से जस्ट पहले देख लेना. Okay, hydrostatic law. Now we all know that when you talk of fluid at rest, so fluid at rest or those other conditions, if I take a point over here and the pressure in x direction is P, then pressure in all directions will be P. But the question is, what is the value of this pressure? So value of this pressure is found out by hydrostatic law.
So how do you solve it? What is the method of solving it? So it's very easy. So what will you do? First of all, you will consider the ground of the body, of the fluid body. This can be liquid or gas. And you will mark a coordinate system. So I have a sign convention with me. I always mark the coordinate system at the bottom. मैं हमेशा coordinate system को bottom पे fix करता हूँ. तो ये मेरी XYZ directions बन जाती हैं. So if I consider the point, y is always the height of the point from bottom. Y is always the height of the point from bottom. Now for this particle, at the point there will be a particle. So for the particle you will write down the pressure force plus viscous force plus weight is equal to mass into acceleration. But the particle is at rest. So when the particle is at rest, acceleration will be 0. Entire fluid mass is at rest. So shape of the fluid mass is constant. Viscous force will be 0. So we are left with only pressure plus weight equal to 0. So when you will open this differential equation, you will have minus 1 by rho del P by del X is equal to 0. Then you will have minus 1 by rho del P by del Y minus G equal to 0. And you will have minus 1 by rho del P by del Z is equal to 0. So this is the hydrostatic law. ये आपके पास hydrostatic law आ जाता है. Now guys, have a look. So minus 1 by rho del P by del X is equal to 0. So what does this suggest? This tells you that pressure gradient along X direction is 0. So pressure is not a function of X. Pressure is not a function of X. X is the horizontal direction. Similarly, minus 1 by rho del P by del Z is equal to 0. So pressure is not a function of Z. So Z, pressure is not a function of Z. What does this mean? This simply means if you talk of a horizontal plane, this is X direction, this is Z direction, pressure is neither a function of X nor a function of Z. So all these points lying on the horizontal plane will have same pressure. So horizontal plane is always an isobaric plane. Horizontal plane is an isobaric plane. Yes or no? Am I correct? Horizontal plane is always an isobaric plane. Horizontal plane is always isobaric because all the points on the plane will have same pressure value, right? But when you talk of the third equation that was along the y direction, that was along the vertical, minus 1 by rho del P by del Y minus G is equal to 0. What is this? Net pressure force along y direction, weight which is obviously along y direction. So you will have del P by del Y is equal to minus rho G. So you will have dP by dy is equal to minus rho G. What does this equation suggest? This equation suggests that dP is equal to minus rho G dy. dP is equal to minus rho G dy. What is the physical meaning? Physical meaning is that let us suppose there is a point which is at a distance y from the bottom. So pressure here is P. Density here is rho. Let me take a nearby point which is at a further distance of dy. So what is the difference of y coordinate between the 2 points? The difference of y coordinate is dy. Now at this point the pressure will be different. So pressure will be P plus dP. So what is the difference of pressure? dP. So if there are two nearby points which have a difference of coordinate dy, the difference of pressure will be dP. अगर दो पॉइंट्स हैं जिनका डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट इज dy, their difference of pressure will be dP. This is the physical meaning of this equation.
Or you can also say pressure gradient at a point is equal to negative of specific weight of fluid at the point. Pressure gradient at the point is equal to negative of specific weight at the point. Now you will ask me, sir, what is negative? What is the meaning of negative? Because when y increases, if you go up, dy will be positive, right? But positive into negative means negative, so dp will be negative. If dp is negative, pressure decreases. If you go up in the fluid, pressure decreases. If you come down in the fluid, pressure increases. This is the meaning of negative sign. Yes or no? Please be fast. Please do let me know. Yes or no? Please be fast. Please do let me know if I am correct or not. Please do let me know if I am correct or not. This is called as hydrostatic law. So either you write like this or you write like this, this one. It doesn't matter. These are same things only. ठीक है? बस मैंने इसका conclusion लिख दिया आगे जाके. Now, pressure difference between two nearby points is minus rho g dy. So, what is the pressure difference between far away points, point 1 and point 2? So, you will integrate this equation from point 1 to point 2. Now, on the left hand side, you have derivative of pressure. So, pressure at 1, pressure at 2. And on the right hand side, you have derivative of dy. That is the y coordinate. So y coordinate at 1, y coordinate at 2. So this equation will tell you what is the pressure difference between two far away points, and that will be integral of minus rho g dy from y1 to y2. y1 to y2. This is the pressure difference between any two points, right? Please do let me know, guys, if this is correct or not. Please do let me know, guys, if this is correct or not. Now we know that density of a substance depends upon the pressure. So if there are 2 points which have different densities, those 2 points will have different, there are 2 points which have different pressure, they will have different density also. ठीक है ना? हमें पता है किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है. तो अगर 2 पॉइंट्स का प्रेशर डिफरेंट है तो उन पॉइंट्स का डेंसिटी भी डिफरेंट होगा. नाउ चेक, वी ऑल्सो नो pressure is a function of y. But density is a function of pressure, है ना? So what will happen? Density will also be a function of y. So actually this term density is a function of y. So it is not a constant. You cannot take it outside directly. Similarly, if you know, when we move away from the earth, the acceleration due to gravity decreases. So acceleration due to gravity is also a function of y. However, we generally treat it as constant. हम लोग उसको constant treat करते हैं. ठीक है ना? अच्छा, now let us suppose we have an incompressible fluid. What is incompressible fluid? Incompressible fluid means that the bulk modulus is infinite. Incompressible fluid means bulk modulus is infinite. For any fluid, we write d rho is equal to rho dp by k. So if there is a change in pressure, there will be a change in density. If there is a difference of pressure, there will be a difference of density. But if the bulk modulus is infinite, d rho will be 0. Therefore, rho is a constant. Everywhere the density is same. In that case, what will happen? So P2 minus P1, that is equal to integral of minus rho g dy from y1 to y2, and rho is a constant. So rho and g will come out. So you will have minus rho g y2 minus y1. So this is what happens when you are talking of incompressible fluid. Am I correct, guys? All of you, please do let me know. Am I correct? Or is there a doubt over here? Am I correct? Or is there a doubt over here? So बीवी के हाथ की चाय का स्वाद ही अलग होता है ना?
So she has just come inside the room. I am saved. मैंने बिल्कुल टाइम पे डायलॉग मार दिया. Okay. Now, generally, we do not use the formula in the same form. We convert this y into h. Because what is y? Y means height from the ground. Y means height from the ground. Bhavin, padhai pe dhyan. Y means height from the ground. And what is h? H means depth from top surface of water. Depth from top surface of water. ठीक है? Bhavin, I am not alone in the room. पढ़ाई पे ध्यान देते हैं. So what is y? Y is the height from the bottom and h is the depth from top surface of water. So any point can be written in terms of two coordinates, either y, that is the height from the ground, or h, that is the top surface of water, from water. And in fact, we are mostly interested in this. When a deep sea diver will go down, so at what depth he will face a difficulty in breathing, at what depth he will feel pressurized on the body, up to what depth the submarine can go down. So we always work in this term. We generally work in this term, right? H term. And these two coordinates, they are opposite of one another. So our equations will change. What will be your equation? The equation will be dp by dh is equal to rho g. Now when we go down, h value will increase. So this will become positive. Also dp is equal to rho g dh. So we will have P2 minus P1 is equal to integral of rho g dh from 1 to 2. And again, if the fluid is incompressible, you will have P2 minus P1 is equal to rho g h2 minus h1. ठीक है ना? So generally we write this equation in terms of depth from the top surface of water. Now further we will mold this a little. So what we have? We have P2 minus P1 is equal to rho g h2 minus h1. Now this means if this is the top surface of the fluid, this is the top surface of a fluid, maybe water or air, जो भी fluid है, and within the fluid there is a point 1, its depth is h2, the pressure here will be P2. There is a point 2, its depth, h1, this is h1 and this is h2. So pressure difference P2 minus P1, that is equal to rho g h2 minus h1. Let us say point 1 lies at the top surface of fluid. Point 1 lies at the top surface of fluid. In that case, what will happen? H1 value will be 0. If H1 value will be 0 and let us say at the top surface of fluid, the pressure is P0. Who will apply this pressure? If this is a gas inside a closed container, then the roof will apply this pressure. If this is the water in the ocean, then atmospheric air will apply this pressure. If there is a bucket, in the bucket we have water and oil, then oil will apply the pressure on the water. So let us say this pressure is P0. So what you will do? You will substitute this condition. If H1 is equal to 0, this means the point 1 lies on top surface of water. P1 will be equal to P0 and you will have P2 is equal to P0 plus rho g H2. Rho g H2. P2 is equal to P0 plus rho g H2. Correct? So in simple terms, pressure at any point, point 2. Pressure at any point within a fluid is equal to pressure at top surface of water, top surface of the fluid plus rho g H. Rho g H. So if there is a fluid column of height h, it will create a pressure rho g H. So what do you mean by rho g H? Pressure because of fluid column of height h. Pressure because of fluid column of height h. Fluid column of height h.
So guys, please do let me know if this is clear or not. Please do let me know if this is clear or not. I think this is very easy, right? This is very easy. Now guys, please remember, whenever you are writing pressure at a point, then the fluids above the point will have a pressure value. How much? Rho GH. जब फ्लूइड कंप्रेसिबल हो, अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हो तो ये लॉ यूज नहीं कर सकते, अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल हो तो हम ये लॉ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. नाउ प्लीज नोट, से फॉर एग्जांपल, I hope you remember, there was a container, we will pour oil, then we will pour water, oil will go up, water will settle down, and finally the condition will look like this. So this is water, and above water, this is oil. Let me find out the pressure at a point like this one. Okay? So above this point P, first of all, there is a height of water, HW. So water will create a pressure. How much? Rho WG HW. Now above water, oil is creating a pressure. But what is the height of oil? Height of oil is HO. So there will be a pressure because of oil. Rho oil, GH oil. And above oil, atmospheric pressure is creating something. So atmospheric air is creating a pressure. So P atmosphere, pressure because of atmospheric air plus pressure because of oil plus pressure because of water. This will give you the pressure at point P. So if you go down in the fluid, these pressure values will add up. If you go up in the fluid, these pressure values will get subtracted. ये आपको ध्यान रखना है whenever you are solving pressure measurement questions. हेलो KMS7, how are you? तो बेटा, आई होप प्रिपरेशन सही चल रही है. वैसे आपका असली नाम क्या है? चलो ठीक है. सो मैं आपको एजेंडा बता देता हूं. हमारा एजेंडा ये है, हम फ्लूइड मैकेनिक्स को रिवाइज कर रहे हैं रिटन फॉर्म में. किस फॉर्म में? रिटन में. तो ओरल रिवीजन तो हो ही जाता है, मगर रिटन फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं. तो अभी आज हम 8 बजे तक करेंगे. जितना हमसे रिवाइज हो जाएगा बहुत बढ़िया. उसके बाद हम 29 तारीख से सेशन रखेंगे. सो सेशन में क्या करेंगे? डेली एक चैप्टर रिवाइज करेंगे और रात को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका. तो एक ही दिन लगाएंगे, उससे ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे हर चैप्टर पे. एक दिन मतलब पूरा दिन नहीं. एक दिन का मतलब ये नहीं है पूरा दिन कि हमने 3 घंटे चैप्टर के रिवीजन पे लगाए और रात को 2 घंटे प्रैक्टिस सेशन कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया. इतना ही मेरा एजेंडा है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? अच्छा, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं. सो व्हाट we have water, and let us say for water it is given that density at any point is equal to 1000 plus 0.004 h. This is given to us. If there is a point which is at a depth h, this is the value of density at the point, and it says atmospheric pressure is equal to 101.325 kilopascal. Find out the pressure at a depth of 1000 meters. So how are you going to solve this question? Please be quick. जल्दी से बताइए. Please be quick. How are you going to solve this question? How are you going to solve this question? Please be quick. P is equal to P naught plus rho GH. Should I apply P equal to P naught plus rho GH? Should I apply P equal to P naught plus rho GH? I think not. Why? Because density is a function of H. So if we go down in the fluid, the density is increasing. Why it is increasing? Because the pressure is increasing. So density is dependent upon pressure. The fluid is not incompressible, fluid is compressible. So what you will do? You will go back to the differential equation. So you will simply say dP by dH is equal to rho G. That is 1000 plus 0.004 into G. So you will go back to this equation. So you will say dP is equal to
1000 plus 0.004 g into dy. Now we will integrate this equation. So what I will do, at y equal to 0, pressure is atmospheric pressure, and sorry, not y, h. At h is equal to 0, pressure is atmospheric pressure. At some particular h, the pressure is P, which I want to find out. I want to find out pressure at a particular h. So what I will get? I will get P minus P atmosphere is equal to 1000 h, where h varies from 0 to h, plus 0.004 h, 0.004 h dh. So what is the integral of h dh? I think integral of h dh is h square by 2. Integral of h dh is h square by 2, है ना? And h varies from 0 to h, and there is a g also in the multiple. So बस अब आपका आंसर आ जाएगा. So what you will get? You will get P is equal to P atmosphere plus 1000 h plus 0.004 h square by 2 into g. So this is the value of pressure at any depth. You put h is equal to 1000 meter, you will get your answer. समझ रहे ना आप? तो जब भी आपका कंप्रेसिबल फ्लो हो, डेंसिटी h या y का फंक्शन हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते. मगर इसमें आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं जो थोड़ा सा आपका काम आसान बना सकती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन किलो पास्कल. सो दिस टर्म ऑल्सो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इन किलो पास्कल. So when I will divide this, I will get this by 1000. I will get answer in kilopascal. That is SGH. So ये चीज आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना? This is how to use hydrostatic law. अच्छा, अब इस लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. हाइड्रोस्टैटिक लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर. So this law helps us to find out pressure at any elevation in the atmosphere. So the topic name is pressure variation in atmosphere. Pressure variation in atmosphere. Pressure variation in atmosphere. Okay. Now what is our problem? Our problem is, let us suppose this is Indian Ocean. Okay. And right now, the temperature at the surface of Indian Ocean is T naught, 15 degrees Celsius. Pressure at the surface of Indian Ocean is P naught. And this is India. So this is Deccan Plateau. This is Bombay. This is somewhere Delhi and Northern Plains. This is Himalayas. And this is somewhere Shimla. So Shimla is at an altitude of y from the zero sea level, from the Indian Ocean. So I want to find out what is the atmospheric pressure at this point. Now definitely when we talk of atmospheric air, so air is a gas. So air is compressible because of its very low bulk modulus. So when you go up in the sky, the pressure will decrease and density will also decrease. So density is not constant. Density is variable. So you cannot use the formula P2 minus P1 equal to minus rho g Y2 minus Y1. You cannot use this formula. है ना? So let me do one thing. Let me consider that here the density is rho naught. Now at a distance y from the ground, the pressure will be P, temperature will be T, and density of atmospheric air will be rho. Now for this particular point, I can write hydrostatic law, that is dP by dy is equal to minus rho g. But I think when we talk of ideal gases, rho is equal to P by RT. For ideal gases, rho is equal to P by RT. So if you substitute the same thing over here, you will have dP by dy is equal to minus P by RT into G. And therefore you will have dP by P is equal to minus P minus G dy by R
T. Now what is G? G is the acceleration due to gravity. Civil वालों R की वैल्यू याद रखनी है. For atmospheric air R is equal to 287 joule per kg Kelvin. Mechanical वालों को ये याद रह जाएगी because they learn it in thermodynamics also. But for civil, please remember the density of R for atmospheric air is this much. Now check. You will ask me, sir, what is the use of this equation? Actually, the variation of temperature with altitude, temperature as a function of y, this data is already available with us. So if we have this data, using this data we can find out pressure as a function of y also. So there are multiple scenarios. Say for example, there is a case where the atmosphere is isothermal. So let me say atmosphere is isothermal. Let me say atmosphere is isothermal. Atmosphere is isothermal. ठीक है? So when atmosphere is isothermal, temperature is not a function of y, and everywhere the temperature is same. It is T naught only. Everywhere the temperature is same. Now what will happen? dP by P is equal to minus G by RT naught into dy. So once you integrate, you will have, so how will you integrate? You will say at the bottom, that is at y equal to 0, pressure is P naught. But we want to find out the pressure at an altitude y. So you will say natural log of P by P naught is equal to minus G by RT naught y. So we will have P is equal to P naught e raised to power minus G by RT naught y. This question was once asked in GATE exam also 2016, but for mechanical. 2016, but for mechanical. If the atmosphere is isothermal, what is the variation of pressure with altitude? So variation of pressure with altitude is exponential. और मेरे ख्याल से मैंने pressure variation in atmosphere में बहुत सारे questions कराए हैं, कुछ classes को तो practical examples भी कराए हैं. So by how much distance the aeroplane will go down when your air will pop? Or if you go from Bombay to Himachal, how much breathing capability will change? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने आपको, ठीक है, in this chapter. Okay guys, now check. Now there is a case too. I will let you know why we are doing these cases. Because in GATE exam you will only get cases. But what is the importance of these cases in real life? I will let you know. Now the next case is temperature decreases linearly with altitude. Temperature decreases linearly with altitude. Temperature decreases linearly with altitude. Linearly with altitude. So like you have y equal to mx plus c. Similarly we have temperature is equal to T naught minus beta y. Okay. So minus beta is the slope because temperature decreases with altitude. So temperature is equal to T naught minus beta y. Temperature is equal to T naught minus beta y. T naught is the temperature at 0 sea level and beta is called as lapse rate. When you move up in the sky, how much the temperature will decrease with altitude. So for our Earth's atmosphere, that is troposphere, it is 0.0065 degrees Celsius per meter or 6.5 degrees Celsius per kilometer. Okay, with every kilometer the temperature decreases by this much amount. Now what you will do? You will simply say again dP by P is equal to minus G by RT dy. G by RT dy. So you will say dP by P is equal to minus G by R into T naught minus beta y into dy. Now you just integrate. So you will have natural log of P by P naught. Again the limits are same. So what are the limits? From y equal to 0
up to y, from pressure P naught up to P. So when you will integrate, you will have natural log of P by P naught. Natural log of P by P naught is equal to minus G by R into natural log of T naught minus beta y upon minus beta. So minus and minus will cancel out and y varies from 0 to y. ठीक है ना? So your final formula will be P is equal to P naught into 1 minus beta y by T naught raised to power G by R beta. So this is your final formula. ये आपके पास final formula है. Guys, what kind of question can come? They will give you the lapse rate. They will give you the basically they will tell you the what is the type of atmosphere, whether the atmosphere is isothermal or the temperature decreases linearly with altitude. And they will tell you these are the conditions at the 0 sea level. This is the lapse rate. What is the pressure at an altitude of 1000 meter? Or they will tell you what is the altitude of the point where the atmospheric pressure is half the atmospheric pressure at 0 sea level. तो इस तरह से क्वेश्चन का बनेगा, ठीक है, जो गेट में आ सकता है. But in your syllabus I have done other type of questions also. जैसे मैंने ऐसा क्वेश्चन भी कराया है कि an aeroplane is flying at this much altitude. So what will be the dynamic pressure at the nose of the aeroplane? So what you will say, to find out the dynamic pressure at nose of aeroplane, first of all you need to find out the local atmospheric pressure at that altitude. So for local atmospheric pressure at that altitude you will need this equation. ठीक है ना? So pressure variation in atmosphere देखो, फ्लूइड डायनेमिक्स में भी मैंने एक क्वेश्चन कराए हैं जो इस पे बेस्ड है, और प्लीज डू लेट मी नो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है देन आई विल हेल्प यू आउट. ठीक है? Now what is the use of this? What is the use of this? The use of this is 0 sea level. This is Mount Everest, 8 kilometers. This is troposphere, the lowermost layer of atmosphere, which is called as troposphere. At the bottom, temperature is 15 degrees Celsius. At the top, temperature is minus 56.5 degrees Celsius. Total height is 11 kilometer and the temperature decreases by 6.5 degrees Celsius per kilometer. An aeroplane is flying at this altitude. So what will be the density of local air? What will be the density of local air? Therefore, what will be the lift force? What will be the drag force? To calculate this, we need to find out the pressure at the same altitude. जब तक आप इस altitude का pressure find out नहीं करेंगे, तब तक आप इस altitude पे हवा की density नहीं find out कर सकते, हवा की lift force नहीं find out कर सकते, drag force नहीं find out कर सकते, and you cannot decide at what velocity the aeroplane should cruise. If you do not know the pressure at every point in the atmosphere, you do not know the density of atmospheric air, and you cannot calculate the concentration of the pollutants. You cannot calculate the concentration of ozone layer and filtration of ultraviolet rays. तो बहुत सारी calculations में ये चीज important है, finding out pressure variation with atmosphere. ठीक है? Now, after troposphere, there is stratosphere. So stratosphere is an isothermal atmosphere, and everywhere the temperature is minus 56.5 degrees Celsius. So this is like 10 kilometers wide. Now after stratosphere, there are other layers also like mesosphere, ionosphere, thermosphere, exosphere, but that won't be required. अब मैंने प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर में इसके अलग अलग होमवर्क दिए हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी दिए हैं. So I have given this entire data and I have asked you to find out the pressure at the top of Burj Khalifa, or I have asked you what is the atmospheric pressure at 15 kilometers. So what you will do, first of all, from here, using the condition of troposphere, you will find out the pressure of this point, and from this point, using the condition of constant temperature, you will find out the pressure of this point. तो इस तरह से multiple possibilities बनती हैं regarding the questions. Yes or no? Please be fast. Please do let me know if this is clear or not. Please do let me know if this is clear or not. अच्छा guys, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूं, मतलब नेक में. ठीक है? सो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. कोई डाउट हो तो बताइए.
If any kind of doubt is there, please do ask me. कोई भी डाउट लग रहा है, किसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था इस टॉपिक में, प्लीज डू आस्क मी, प्लीज डू लेट मी नो, जल्दी से बताइए. सो भविन, KMS7, Reddy, Rishabh, all those people who are watching the video, please do let me know if there is a doubt or not. Please do let me know if there is a doubt or not. So those students who have come afterwards, so for them there is an information. If there is anyone from mechanical with experience who has lost job during COVID-19, so you can tell them that MSME Tool Room Hyderabad has released some vacancies. So they can apply over there. ठीक है ना. बहुत सारे मैकेनिकल के लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली गई है, तो वैसे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम ही है, बट इवन इफ 1 or 2 of your friends is getting a job somewhere, then that is good only. So anyone, please do let me know if there is any kind of doubt. If there is any kind of doubt, if there is no doubt, let us take a break of 2-3 minutes and then we will resume. So please do let me know if there is a doubt. If there is no doubt, we will continue after 2-3 minutes. जल्दी से बताइए. एक बार नोट से गो थ्रू कर लीजिए. एक बार नोट से गो थ्रू कर लीजिए. Type down your doubt and I am here only. I am sitting here only. ठीक है. एक बार डाउट देख लो और do let me know. Also guys, there is one more information I forgot. So it's December, right? In December and summers. So every IIT, in fact every professor in IIT, he or she gets a fund to bring or to collaborate with foreign professors like from America, like Stony Brooks, Oxford, Harvard, Caltech from Canada, है ना? So like this, so many universities are there. Not Caltech, what is the name of that university? I've forgotten. University of Edmonton. So many universities are there all around the world, which are like famous universities. So IIT professors, they get a fund and they collaborate with foreign professors and create courses, like special type of courses, like I told you in the starting, fluid mechanics for astrophysics, right? So like this, they create some courses which are like 10 to 15 days long, and that course has a fees of 1500 rupees. Now earlier it was like the professor will come to the IIT from foreign university and students will go over there. They will attend the lecture in the winters. So 1500 will be the cost of the lecture, and there will be a fees
for a daily stay. So 150 rupees per day, in which there will be accommodation, and 100 rupees for food per day. है ना? So it's a very good thing. So you get to interact with IIT and professors, IIT MTech students, IIT PhD students. They will tell you what kind of technologies are going on, and in those courses a lot of people will come. Sometimes industrialists also come, factory people also come. So you get to make contacts over there. So अभी physical course तो हो नहीं सकता because of this corona, है ना? So most probably they will be having online courses, ज्ञान courses. So name of this initiative is ज्ञान course. So you can tell your juniors, like second year people, third year people, or your brothers and sisters, to go for it, to look for it. And this is definitely very useful. People get intern from these, people get jobs from these, PhD from these. आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ कॉन्टैक्ट बहुत बढ़ते हैं और अच्छा होता है, सीखने के लिए भी अच्छा होता है. So you can check ज्ञान course. Every professor, every IIT, he or she will conduct his or her own ज्ञान course. I'm not sure what is the situation this time, but earlier it would happen in every year, in every holiday, summer or winters. तो उस कोर्स को सब लोग अटेंड करते हैं, बीटेक स्टूडेंट भी, एमटेक स्टूडेंट भी, पीएचडी स्टूडेंट भी, प्रोफेसर भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोर्स. तो आप चेक कर सकते हो. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू. आज पता नहीं, आज मैं थक गया हूं. सो मेरे को आदत नहीं है ना यार ये कंप्यूटर पे इतनी देर बैठने की. सो ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर आई इजिली टुक 9.5 आवर और 10 आवर क्लास, बट आज बैठे बैठे थोड़ा सा हो रहा है, हेडेक हो रहा है. Okay, now check next part. So next term is gauge and vacuum. Next term is gauge and vacuum. And when we talk of gauge, first of all, let us see what is the meaning of gauge. So I hope you remember this example of mine. So I always say, let us suppose there is a pipe, and in the pipe there is some fluid which is having a pressure P. We will connect a basic device with this pipe, and this pipe will have a hole so that atmospheric air comes inside. And there is a leak proof piston over here. So what will happen? So if you will draw the free body diagram of the piston will have a weight. Atmospheric air is applying a pressure, so because of atmospheric air there will be a force. The fluid which is flowing in the pipe, that will also apply a pressure, so there will be a pressure force. Obviously, if this pressure force is greater than weight of the piston, if it is greater than atmospheric pressure, the piston will move up, the spring will get compressed. If the spring will get compressed, finally in equilibrium you will have the spring force will also act downwards, and you will have Pa is equal to P atmosphere plus weight of the piston plus Kx. This is the final equilibrium condition, and I think this will tell us P is equal to P atmosphere plus W by A plus Kx by A. Now you have designed this device, so you will know the weight of the piston, you will know the area of the piston, you will also know the spring constant of the piston. And let us say initially when it is not connected to any pipe, this position is 0. So based on the motion of the or you can say the natural length of the spring is 0. So based on the motion of the piston, you can find out the x value also. So there will be readings 1 mm, 2 mm, 3 mm and so on. So this we can measure. But if you do not know the value of atmospheric pressure, you cannot predict the pressure value of the fluid. You cannot predict the pressure of the fluid. However, I can definitely say from my measurement, I can find out this value. That is the pressure of the fluid minus atmospheric pressure. Yes or no? I think from my measurement X, if I do not know the atmospheric pressure, I cannot tell the value of pressure P. But I can definitely tell P minus P atmosphere. So this value, actual pressure of the fluid minus atmospheric pressure of the atmospheric pressure which comes from the device,
This is called as gauge pressure. This is called as what? Gauge pressure. Absolute pressure of the fluid minus atmospheric pressure. This is called as gauge pressure. And in fluid mechanics, we always write pressure as gauge pressure. We do not write it as actual pressure. We always write it as actual pressure minus atmospheric pressure. So in fluid mechanics, whenever I say P, I am talking of gauge pressure. But if I specifically mention that absolute pressure, I will write like this. So actual में ना ऐसा था, absolute pressure minus atmospheric pressure. Absolute pressure, here also it is absolute pressure, here also it is absolute pressure. समझ रहे हैं ना आप? So आपको डिवाइस से क्या मिलता है? आपको डिवाइस से मिलता है how much the absolute pressure is greater than atmospheric pressure. So this difference is called as gauge pressure. How much? Please write down. How much the absolute pressure of the system, absolute pressure of the system, pressure of the system is greater than surrounding pressure, is greater than surrounding pressure, is greater than surrounding pressure. ठीक है? This is gauge pressure. डिवाइस जो होती है, जनरली मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस टेल यू एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सिस्टम माइनस सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. जो वैल्यू आपको डिवाइस ने दी उसको हम गेज प्रेशर कह देते हैं. ठीक है ना? अब देखो, मैं ना कई बार एक क्वेश्चन कराता होता हूं, 2-3 तरह के क्वेश्चन कराता होता हूं, इन विच अ गेट क्वेश्चन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. So what I do, so the gate question says there is a vertical tube, and in the vertical tube there is a piston, and above piston there is water. I hope you remember, I have done this question in every class. मैंने आज तक कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन डिस्कस ना किया हो, और इस क्वेश्चन पे अच्छा खासा हाफ एन आवर स्पेंड किया है. So इसमें हमने कई बार पॉइंट्स भी ढूंढे हैं कि हाउ इंट्यूशन कैन बी रॉन्ग. I hope you remember this question. There is a vertical tube. The vertical tube has an area of cross section small a. Its bigger area of cross section is capital A. And within the tube there is a massless, frictionless piston. And above the piston there is water. Both the sides are exposed to atmosphere. So I always ask you, how much force will be applied on the piston to stop the piston from falling down? पिस्टन पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि पिस्टन नीचे ना गिरे, है ना? अगर आपको याद हो तो इससे मल्टीपल चीजें प्रूव होती थी कि एक तो हम ये डिस्कशन करते थे कि प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी सेम बिकॉज द वॉल इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट सम प्रेशर. ऐसा भी कुछ डिस्कशन करते थे. वो तो चलो अलग बात हो गई, बट हियर व्हाट इज द एजेंडा? सो आई ऑलवेज टेल यू, वेदर यू कैलकुलेट फोर्सेस यूजिंग एब्सोल्यूट प्रेशर्स or you calculate forces using gauge pressures, your answers are going to be same. अगर आपको ध्यान हो तो ठीक है. अगर ये चीज नहीं पता है तो do ask me, I will help you solve it out. मैं आपको अलग से भी पढ़ा दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो ये मैंने कई बार प्रूव किया है. In mechanics, we are interested in finding out the motion of the body. We are interested in finding out the deformation of the body. And when you want to find out the motion or deformation of the body, you need resultant force. Now resultant force you calculate either by taking absolute pressure values or you calculate by taking gauge pressure values. You will always get the correct answer. Say for example, if I take absolute pressure value, what is the pressure at top of piston? So you will say the height of water is h. It is exposed to atmosphere, तो pressure will be P atmosphere plus rho gh. कितना pressure आएगा? P atmosphere plus rho gh आएगा. And at the bottom, the pressure is P atmosphere. So what will happen? P atmosphere will cancel out. So you are left with rho gh. Similarly, if you take gauge pressure value, so what is the gauge pressure value of atmospheric pressure? It is 0 only. भैया
atmospheric minus atmospheric is 0. What is the gauge pressure value of upper side? Rho gh. So again you will get the same effect. तो जब आप फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं तो वो जो एटमॉस्फेरिक वाली टर्म्स होती है ना, वो सभी साइड कैंसल आउट हो जाती हैं और बॉडीज के अंदर जो रिजल्टेंट मोशन या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है वो गेज प्रेशर से भी कैलकुलेट किया जा सकता है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कई बार डैम का भी एग्जांपल लेता हूं. तो आपके साथ मैंने कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जांपल जरूर लिया होगा अगर हमने पहले डिस्कशन किया है, पर अगर नहीं भी पता है तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं जरूर बताऊंगा. सो फ्लूइड मैकेनिक्स में फोर्स कैलकुलेट करनी होती है, मोशन कैलकुलेट करनी होती है, डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी होती है, तो हम सीधा गेज प्रेशर की बात करते हैं. मगर थर्मोडायनेमिक्स में यू हैव टू कैलकुलेट द स्टेट ऑफ द सिस्टम, द स्टेट ऑफ द गैस. So for that you need absolute pressure. ठीक है? So there is a difference in pressure of fluid mechanics and pressure of thermodynamics. In thermodynamics we write absolute pressure, in fluid mechanics we write gauge pressure. ठीक है? Now once you are done with this, you are done with the idea of pressure. So please note the type of questions that you should do. So I have given like different types of question हमने किए हुए हैं. So जैसे एक हाइड्रोलिक जैक का क्वेश्चन करते हैं. So in hydraulic jack question I give you a structure of hydraulic jack. So what I say that there is a piston over here, there is a piston over here, that piston is attached to a lever arrangement, that piston is attached to a lever arrangement, the piston can move in a cylinder which is connected with another cylinder. Hydraulic jack. Okay. Now what I ask you कि भैया if you will move the lever, how much force will be created on the other side? What is the hi Rajneesh, how are you? Thank you. वैसे आज तो कुछ स्पेशल नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल किया हो, बट आज हम रिवीजन कर रहे हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं. एनीवेज थैंक यू. ठीक है, तो पर आज ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई गुड जॉब नहीं किया. मेरा एक ही एम है कि आप लोगों की रिवीजन हो जाए. ठीक है, और उसके लिए जो भी बनेगा मैं करूंगा, वो उसमें कोई डाउट ही नहीं है. पर अगर मुझसे मिस आउट हो जाए कुछ, देन you guys can always tell me. अगर if I miss out anything and if I make a mistake anywhere, you can definitely tell me anytime without any hesitation. कभी भी आप लोग मुझे बता सकते हैं. ठीक है ना? सो लेट अस गो बैक. हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे. सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम, एंड हमने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किया. अगर आपने नहीं भी प्रैक्टिस किया तो घबराना नहीं है, सिंपली एक बार बुक्स में देखो, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे. सो देयर इज piston 1 on the left hand side, piston 2 on the right hand side. Piston 1 is attached with a lever. Piston 1 is attached with a lever. So what force we will apply over here to lift the car on this side? So what you will do, you will say the pressure at this point and pressure at this point will be same. Hydrostatic law, pressure is same on horizontal planes. If I know this pressure, I can find out this pressure also by moving up. If I know this pressure, I will get the force on the piston. है ना? So आपको बस इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगानी है, आपके आंसर आ जाएंगे. बस एक चीज ध्यान रखना, you are applying the force at the end of the lever, so you have to find out how much is the force at this point also. अच्छा, I improve my marks. ठीक है, तो रजनीश बेटा, इस केस में हम लोग काम करेंगे, we will talk separately. मतलब I will need to understand what are the subjects in your bucket, and definitely if you have got 58 marks in first attempt, sorry, and definitely if you have got first 58 marks in first attempt, you can improve it a lot, and definitely you will do much better this time. So मेरे को एक बार अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कर रखे हैं और किन सब्जेक्ट्स की रिवीजन पे हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. तो आपको एक शेड्यूल बना के दे सकता हूं, और वो शेड्यूल आप फॉलो कीजिएगा, अपने आप आपको अच्छे मार्क्स आएंगे. सो कॉल मी टुडे एट 9 o'clock. ओके, 9 PM यू कैन कॉल मी.
Okay guys, so this is one type of question. Then I have done a good question from DS Kumar book also. So there is a website called as bok.org. So from bok.org you can find out any book. ठीक है ना, बहुत सारी बुक्स वहां पे मिल जाती हैं. So जैसे आपने कोई ना कोई तो बुक ऑलरेडी होगी आपके पास. I am definitely sure that there will be a book with you. So you just go through the solved examples of those books. You will find these questions. These questions are very common. बहुत सारी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नॉट मच टाइम विद यू. मगर आपकी बुक्स निकालिए, आपके पास जो भी बुक है उस बुक को टटोलिए, उसमें देखिए कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो मैं एक बार सॉल्व जरूर करके देख लेता हूं. आई विल हैव एन एडवांटेज. ठीक है. नाउ लाइक वन क्वेश्चन आई सॉल्व कि भैया there is a container, there is a tank, in the tank there is water, there is gasoline, there is air, and the odometer is saying that the container is full, but actually the container is not full. What will be the height of air in the tank? So like this. So while solving this question we check some shortcuts also, that why we should not calculate rho gh in the first hand, because a lot of terms will cancel out. So I always write pressure like this: 1 centimeter of water. I never write it as rho gh. I always write it as 1 centimeter of water, because down the line in the question these terms will cancel out. ठीक है ना. तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स आप एक बारी सॉल्व एग्जांपल जरूर देख लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए. अच्छा, फिर what else is there? So there is a question from civil exam. There is a question from civil exam. So in civil exam there were 3 buckets. And in this question there are 2 possibilities. One possibility is that buckets are filled. So there are 3 buckets which have different shape and sizes. There are 3 buckets which have different shapes but they have same base area. 3 buckets with different shape but same base area, and these buckets are filled with equal amount of water. So level of water will look like this, level of water will look like this. Now these buckets are placed on the weighing machine. So which weighing machine will show more reading? In which case the pressure force at the base will be more. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनता है. Now you can also say what if we fill the buckets completely, है ना, तो क्या होगा. तो ये क्वेश्चन भी एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देख लो. अरे कोई बात नहीं बेटा, इंडस्ट्रियल 4-5 मार्क्स है ना, बट एप्टीट्यूड मैथ इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए पता क्या कर सकते हो, अभी से शुरू कर दो. अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए ना, आप आईआईटी रुड़की की वेबसाइट पे जाओ. आईआईटी रुड़की की वेबसाइट से पे आपको 2007 ऑनवर्ड्स सारे पेपर मिल जाएंगे. एंड यू माइट बी हैविंग अ गेट क्वेश्चन बैंक विद यू ऑल्सो. ठीक है. सो ऑन डेली बेसिस सिंपली सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स. ये रोज प्रैक्टिस कर लो, देखना अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बिलीव मी, मैंने खुद एप्टीट्यूड ऐसे ही पढ़ा था और कभी भी मिस्टेक नहीं होता था. इंग्लिश वाला क्वेश्चन मैं कभी सॉल्व नहीं करता था, मगर बाकी क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाते थे. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रेशर मेजरमेंट. नाउ दिस टाइम अ वेरी funny thing has happened, that in the syllabus of GATE exam pressure measurement is not written. So earlier it was written, but this time they have removed it from the syllabus. But I don't feel that the question cannot come from this topic, because in mechanical even pumps is not written, but the question from the pump comes. A few times the question from pump has also come. So you should definitely not ignore this topic, because this is a very important topic and a lot of good questions can be framed on this topic. इस क्वेश्चन को तो आपको अवॉइड करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे गेट एग्जाम की तो इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको जरूर सॉल्व करना है. और अगर एक बार ध्यान से कर लिया ना, एक दिन 3 घंटे पे स्पेंड कर लिए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. नाउ चेक. So there are different devices to measure pressure, and the most common device is manometers, which we study for GATE syllabus also. So what is the definition of manometer?
So manometer measures a value of pressure by balancing a column of liquid against that pressure. If you want to measure a pressure value, we will balance a column of liquid against that pressure, we will get our answer. Say for example, manometer has different types and the very simple type is piezometer. सबसे simple type कौन सा है? Piezometer है. So what do you mean by piezometer? So what we will do, we will take a pipe and for the vertical pipe, with the vertical pipe we will attach a tube in this manner. इस तरह से हम एक tube लगा देंगे, ठीक है? Now what will happen? Let us suppose water is flowing inside the pipe. So because of high pressure, the water will rise up in the tube and finally the water will take this much level. Now let me show a simple figure of the same arrangement. So what we have, this is the pipe and this is the tube, and because of the high pressure of water, the water rises up in the tube. Obviously within the tube the water is at rest, so you can apply hydrostatic law. So from this point, let us suppose the radius of the pipe is 10 mm. So here you will have a marking of 10 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm. So from this reading you will be able to make out what is the height of water in the tube from the center line. Now let us say the atmospheric pressure is P atmosphere and the absolute pressure here is P absolute. ठीक है ना? So obviously you can say absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus rho gh, or you can say absolute pressure minus atmospheric pressure, which is gauge pressure rho gh. So you just measure the value of H, you will know the density of the fluid moving in the pipe and you will get the pressure value. So this device is nothing but piezometer. Piezometer में simply इतना ही काम करना है कि fluid will rise in the piezometer tube. You just you just read the height of the liquid in the tube. Yes or no? Am I right? Yes or no? Am I right? Am I correct? All of you, please do let me know. Please do let me know if I am correct or not. Please do let me know if I am correct or not. Right? Now guys, check. First of all, if the gauge pressure is very high, so P is equal to rho gh, then H value will be very high. Now if you take an example, gauge pressure is equal to 1 bar, gauge pressure is equal to 1 atmosphere. You know what will be the height of water in the tube? 10.33 meters. So your tube will be like 11 meters. So you will need a staircase to take the reading from the tube. है ना? So operator will say, I will not work over here. I have to go upstairs through the staircase. So you cannot measure high pressure values. Cannot measure high pressure values because the tube will be very long. Cannot measure high pressure values because the tube will be very long. High pressure values because the tube will be long. High pressure values because the tube will be long. Because the tube will be long. Tube will be long, right? Then second point. Suppose you have a gas flowing in the pipeline. So if gas is flowing in the pipeline, it will get an opening. The tube will act as an opening. So gas will start leaking and the pressure inside the system will drop to atmospheric pressure and the system will get disturbed. So you will not get any reading. Now someone will say, let us close the tube from the top. Then what? Gas is readily expandable. Whether the pressure is less, whether the pressure is high, gas will always completely fill the tube and it will never form a meniscus. Gas kabhi koi meniscus thodi na banayega. So you cannot measure the pressure of gases. Cannot measure the pressure of gases. Cannot measure the pressure of gases. Measure the pressure of gases.
Also, if there is vacuum condition, I think I did not tell you what is vacuum condition. So I will make a rough note. I will make a rough note. I will make a rough note. What is the rough note? If the absolute pressure is less than atmospheric pressure, then gauge pressure, what is gauge pressure? Absolute pressure minus atmospheric pressure. So this gauge pressure is negative, है ना? So what we will do, instead of writing negative gauge pressure, we will write vacuum pressure. What is vacuum pressure? Vacuum pressure is atmospheric pressure minus absolute pressure. How much the atmospheric pressure is more than absolute pressure, or how much the absolute pressure is lower than atmospheric pressure, that is called as vacuum pressure. So this will come into picture when absolute pressure is less than atmospheric pressure. ठीक है ना? So यहाँ पे क्या है? यहाँ पर अगर हमारे पास vacuum condition हो, so if you have vacuum condition, the absolute pressure is less than atmospheric pressure. So what will happen? The atmospheric air will come inside, and the liquid in the pipe, it will form a free surface. The system will get disturbed, and in fact the flow will get stopped. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैक्यूम प्रेशर भी मेजर नहीं कर पाएंगे. सो पाइप में क्या होता है? पाइप में फ्लो इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना? तो अगर अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कम है तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाएगी. एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी तो फ्री सरफेस बन जाएगा, यानी कि हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर ड्रॉप खत्म हो जाएगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी फ्लो इन द सिस्टम. So you cannot measure vacuum. You cannot measure vacuum. So these are the disadvantages of piezometer. So what we can do? We overcome the disadvantages of piezometer by taking a U-tube manometer. क्या आप लेते हैं? U-tube manometer लेते हैं. You take a U-tube manometer. U-tube manometer. You take a U-tube manometer. ठीक है? Now what is a U-tube manometer? So in U-tube manometer, what happens is that there is a tube which has a high density or low density fluid on it, depending upon certain conditions. So let us suppose there is a liquid in it, and we will call it as manometric liquid. अब इसको क्या कहेंगे? Manometric liquid कहेंगे. Initially from both the sides the tube is open. So in both the sides the level of manometric liquid will be same. So this level I will call as 0 level. इस level को आप क्या कहेंगे? 0 level कहेंगे. Now what will happen? I want to measure the pressure of a pipe. Pressure of some liquid may be water in the pipe. So what I will do? I will connect the tube with the pipeline. मैं ट्यूब को पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करूंगा. Now let us suppose the pressure of water is higher than atmospheric pressure. So when I will connect the tube with the pipeline, the water will come outside. So on the left hand side mercury will go down, and on the right hand side mercury will go up, and this is the final equilibrium condition. So what will happen? This entire is manometric fluid. This entire is manometric fluid. This was the initial 0 level, and this entire is water. ठीक है ना? अब आप क्या बोलेंगे? You want to find out the pressure of water. So you will take a point A, you will take a point B. You will say these 2 points are on horizontal plane. So pressure at A is equal to pressure at B. Now you can find out the pressure of C also. So what you will say? If this height is H1, so you will simply say pressure at C is equal to pressure at B, which is the pressure at A plus rho G H1. Rho is the density of water, because this H1 is the column of water. Now pressure at C is same as pressure at D, but how will you write pressure at D? So above D there is mercury whose height is Hm, and above mercury there is atmosphere. So gauge pressure of atmosphere is 0, and pressure of mercury will be rho mg Hm. Now the two pressure values are equal, so pressure at A is equal to rho mg Hm minus rho g H1. तो इस तरह से आप मैनोमीटर सॉल्व करते हैं. So whenever you solve a manometer, you always identify 2 points which lie on the same horizontal plane
and within the same fluid, है ना, अगर आपको याद हो तो। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि do not go in these steps because you are taking more time. So when you want to find out the pressure on left hand side, you start from the right hand side. What is the pressure at the top? 0. If I will go down in mercury, the pressure will increase. How much the pressure will increase? It will increase by rho mg hm. Now this is the pressure at D, but pressure at D is same as pressure at C. So I have got the pressure at C. If I go up, the pressure will decrease. So if I go up H1 meters of water, the pressure will decrease. How much it will decrease? Rho G H1. This is the pressure of B. But pressure of B is same as pressure of A. So I will get my equation directly. This thing will help you a lot when you are solving compound manometers. याद है ना compound manometers? तो वो तो बहुत लेंदी हो जाता है. अगर आप राइट हैंड साइड वाले मेथड से जाओगे, एक एक इक्वेशन लिखोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा. सो आप सीधा ये वाला मेथड यूज करो. जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सो चेक करता हूं. एक तो मेरे लैपटॉप में ना ऐसा हो गया है कि कोई भी पीपीटी अरेंज नहीं है ढंग से. पता नहीं क्या हो गया, मेरी सारी पीपीटीज हौच पौच हो गई हैं. जो वीडियोस वगैरह की थी इकट्ठी वगैरह सब. So let me do one thing. Let me get a question from some book. So मेरे लैपटॉप पे एसके सोम सर की बुक अभी भी खुली हुई है. So मैं यहीं से क्वेश्चन उठा लेता हूं. इसका एडवांटेज दिखाता हूं. इसका एडवांटेज देखते हैं. ठीक है, ऐसे सॉल्व करने का एडवांटेज देखते हैं. Just a second guys, let me get a figure. So एसके सोम सर वाला बुक खुला हुआ था तो वही बुक उठा लेता हूं. So guys, have a look at this figure. इस फिगर को देखिए. देखिए कितना आसान हो जाएगा सॉल्व करना. एक सिंगल गो में आप एयर का प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? वी नो व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, 0. इफ आई गो डाउन, हाउ मच विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट. बिकॉज आई नीड अ पॉइंट, I need 2 points which are in same fluid and same horizontal plane. So from O to A, if I will go down, I will go down a distance of H6 plus H5. So I will simply say I went down, so pressure will increase by an amount of H6 plus H5. Now what is this fluid? This fluid is mercury. So H6 plus H5 centimeter of mercury. Okay, H6 plus H5 centimeter of mercury. Now from this pressure and this pressure, let me call it as B. So B and A, they have same pressure. But from B, if I will go up by how much distance? H4 plus H5, pressure will decrease. So I will go up minus H4 plus H5. H4 plus H5, I am going up, so there is subtraction. So I will go up in terms of water. Now pressure of C and pressure of D, they are equal. So I have got the pressure of D. Again I will go down by how much distance? H4 minus H3. I will get the pressure of F point. But pressure of F point and pressure of E point, pressure of E point and pressure of F point, they are same. So when you are going down, you will say H4 minus H3 centimeter of mercury. Okay. Now you have got the pressure of F point. And if you go up,
if you go up, you will get the pressure of G point. Now this pressure and this pressure will be same. Then you go down, this pressure and this pressure will be same, and then you go up, you will get the value of pressure of air. So कहने का मतलब यही है कि राइट हैंड साइड से चालू करो, नीचे जाओ तो प्रेशर वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जाओ, प्रेशर वैल्यू घट जाएगी. तो इस तरह से आप रिपीट करेंगे अपने स्टेप्स को, आपकी सिंगल गो में इक्वेशन आ जाएगी. सो मैं तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ऐसे ही करता हूं. और अगर आपने देखा होगा तो मैंने रो जी एच नहीं लिखा. आई हैव रिटन H6 plus H5 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, बिकॉज H6 plus H5 plus H4 minus H3 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, दिस विल बिकम अ सिंगल टर्म. सो कैलकुलेशन और भी कम हो जाता है. समझ रहे हैं आप? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो गेट एग्जाम में यू विल फेस अ प्रॉब्लम. Now there is one more type of question also which you should definitely see. Currently a situation is shown to us and currently the pressure in the pipe is P. If the pressure decreases, what will be the new situation? ठीक है? So what will be the new height of the column in the manometer? तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखना है, otherwise we will face a problem. Please do check, इसके बिना काम नहीं बनेगा. ठीक है? Now next. So when we are talking of U2 manometer, in U2 manometer there are certain modifications. Like one of the modification is single column manometer. Now the question is, what is the meaning of single column manometer? Actually, when we are taking reading, when we are finding out the value of pressure from manometer, we have to take the readings in both the limbs, left limb also and right limb also. So what we do in the manometer, we will take one of the limbs as very large. So let me say the area of this limb is capital A. The area of the limb is capital A. Okay. And this is the right limb. Now initially when the manometer is not connected to any system, on both the sides the pressure will be atmospheric. So mercury level will be same in both the cases. Now you connect left hand side to some system, maybe a gas container. So because of the pressure of the gas, the level of mercury in left hand side will go down, and maybe it goes down by a distance of x1. On right hand side, the level of gas will go up. It goes up by a distance of x2, and obviously you will say AX1 is equal to capital AX1, capital AX1. So capital A is the area of left hand side. This is equal to small a x2, which is the area of right hand side. So you can definitely say x1 is equal to small a x2 by capital A. Now capital A is like 500 times small a. So capital A is much larger than small a. So x1 is much larger than, much smaller than x2. It is negligible as compared to x2. Now check what is the mercury. So mercury looks something like this. Mercury आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना? This is how the mercury will look like. Now we also know pressure at point B and pressure at point C will be same. So let me say the pressure at point B is equal to P, but pressure at point B is equal to pressure at point C. That will be rho mg x1 plus x2. But x1 is very less as compared to x2. So pressure is only equal to rho mg x2. So with a single reading, you can find out the value of pressure. This is the advantage of single column manometer. But to find out the value of pressure, you are ignoring the value of x1. So there is an inherent error in this system. And how much is that percentage error? It is small a by capital A plus A into 100. So this is the percentage error if we use single column manometer and we ignore the value of x1. Is it clear to all of you? Please be fast. Please do let me know. जल्दी से बताइए guys. I hope आप लोगों को ये याद है, क्योंकि ये percentage error इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. This question can be asked. They will ask you, they will tell you the area of the left hand limb is 500 times more than right hand side limb. So what is the inherent percentage error in the use of single column manometer? It is small a by capital A plus A into 100. 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? गेट 2005 नहीं गेट not in gate 2005, I think 1995 in the earlier years this question was asked.
Okay, now further, so every manometer has a limit. So what we do, we arrange the manometers in a series so that we can measure a higher value of pressure. तो ये मैंने कई बार explain किया है ये compound meter manometer कैसे काम करता है. How do we measure a higher pressure value from this? Right now I am not explaining it, but I have shown you what is the method to solve it from the question of S.K. Som sir, है ना. So what we do, we connect multiple manometers in series. Every manometer will measure a pressure difference. So there are multiple manometers. So one manometer will measure 10 kilopascal. Second manometer will measure 20 kilopascal. So you are taking a total reading of 30 kilopascal. So जब आप multiple manometers को series में connect करते हैं, you can measure a higher pressure value. ठीक है? So when we talk of compound manometer, we connect manometers in series. Connect manometers in series to measure a higher pressure value. Manometers in series to measure higher pressure value. Higher pressure value. ठीक है? Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? Single column manometer, compound manometer. Please do let me know if there is a doubt. Please do let me know if there is a doubt. जल्दी से बता दीजिए. Now please note, a manometer is giving you a gauge pressure. Means the pressure on left hand side minus atmospheric pressure. What is gauge pressure? Absolute pressure minus atmospheric pressure. So on the left hand side you have absolute pressure. On the right hand side you have atmospheric pressure. So a manometer always measures a pressure difference. It measures the pressure of left hand side minus the pressure of right hand side. So let us do one thing. Let us take a pipe and let us connect a manometer with this pipe. So there is a reason that I always show the manometer on the side, not on the top or bottom. There is a reason for that, and it is related to turbulence. So अगर आपको एक effective measurement करनी है, so you should always connect the manometer in this manner. Okay, you should always connect the manometer in this manner. But if you will show a simple figure, the simple figure will look like this. The simple figure will look like this. So there is a pipe, and the manometer is connected between two sections of the pipe, and within the pipe the fluid is going in this manner. Now what will happen if this is section 1, this is section 2, section 1 has higher pressure, so mercury on the left hand side will be lower and mercury on the right hand side will be higher, है ना? Now from this reading you can find out P1 minus P2. So you can find out pressure drop within a pipe, or you can find out pressure difference between two separate pipes. Left limb को pipe 1 में connect कर दो, right limb को pipe 2 में connect कर दो. So you can find out pressure difference between two pipes. ठीक है ना? So I think what will happen when you are able to find out pressure difference between two pipes, we will start calling it as differential manometer. क्या बोलेंगे इसको? Differential manometer बोलेंगे. You will call this as differential manometer. Now please note, I have proved this somewhere in pumps and turbines also. If this height is HM and the manometric fluid density is rho m and the fluid which is flowing here is rho, then rho m by rho minus 1 into HM, this is nothing but the piezometric head at 1 minus piezometric head at 2. एक मैनोमीटर जो होता है ना वो प्रेशर हेड का डिफरेंस नहीं बताता, मैनोमीटर जो है वो पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस बताता है.
Now in this particular case, the pipeline is horizontal. So P1 star by rho g minus P2 star by rho g. This is nothing but P1 minus P2 by rho g. And what is pressure head? Piezometric head. Piezometric head is pressure head plus elevation head. Piezometric head is pressure head plus elevation head. If the pipe is inclined, then this will not be completely true. अगर पाइप inclined है तो completely true नहीं होगा, तो यहाँ पे H1 minus H2 भी आ जाएगा, सॉरी Y1 minus Y2 भी आ जाएगा. ठीक है ना? All of you, do you know this? All of you, do you know this? इसको आप प्रूफ करके भी देख सकते हो, इसको आप प्रूफ करके भी देख सकते हो. A manometer, a differential manometer always tells the piezometric head difference. That is the difference of pressure head plus difference of elevation head. Difference of pressure head plus difference of elevation head. Now guys, please note, when you represent a pressure value in terms of some fluid, say for example, here we are representing the pressure in terms of manometric fluid. So when you represent a pressure value in terms of fluid, more is the density of the fluid, less is the height of the fluid column, right? So suppose you want to measure high pressure value. You want to measure high pressure value and you take a low density fluid. You know what will happen? Capital H will be large and therefore your tubes must be long and device will be very large in size. Device will be large in size. So in such cases, when the pressure is high, we take a high density fluid like mercury. The H value is small and device is also small. But if you are measuring a very low pressure and you take a very low density fluid, then what will happen? H value will be very small. It will be in millimeters. So your reading will be difficult. It will be difficult to read. It will be difficult to read. So in that case, what we will do? Not low, high. If the density is high, in that case, what we will do? We will take a low density fluid. H value will be large. H value will be large and it will be easy to read. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये मैंने पहले भी प्रूव किया है, इसको मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा हूं. अगर जो प्रेशर वैल्यू मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे? अगर वो प्रेशर वैल्यू हाई है तो हम मैन्योमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी हाई रखेंगे ताकि H की वैल्यू स्मॉल हो. अदरवाइज डिवाइस बहुत बड़ा हो जाएगा, कम्बरसम टू यूज हो जाएगा. एंड इफ द प्रेशर वैल्यू इज लो, then we will use a low density fluid so that H value is large and it is easy to read. ठीक है ना? Now what happens is, say for example, if you have a differential manometer and let us suppose point 1 and point 2, their pressure difference is very small. So to measure a small difference, you will take a low density fluid. But if this density is lower than density of water which is flowing in the pipes, then what will happen? Buoyancy effect will come into picture and this liquid will go into the pipe. Then this entire tube will get filled with water and you will not get any reading. मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? If P1 minus P2 is very small, then to measure P1 minus P2, we will take a low density fluid so that the reading is large. It is easy to read. But let us suppose that we require an oil of 500 kg per meter cube. Now what is the density of water in the pipe? 1000 kg per meter cube. What is the density of oil in the tube? 500 kg per meter cube. Buoyancy effect will come into picture. Oil will go into the pipe and entire tube will be filled with water. समझ रहे हैं आप? In fact, what will happen ultimately? Water is flowing like this also and water is flowing like this also. कोई reading नहीं मिलने वाला है. समझ रहे हैं आप? So in that case, what we will do? We will invert the manometer. Then we will use the manometer in this form. We will use the manometer in this form. This inverted manometer is used. This inverted manometer is used when the density of manometric fluid is less than the density of fluid flowing in the pipe. ठीक है? इसको आप बोलते हैं inverted manometer. क्या बोलते हैं इसको? Inverted manometer बोलते हैं. This we call as inverted manometer. Inverted manometer. This we call as inverted manometer. Okay?
ठीक है. Now one last term in manometers, that is mercury barometer. One last term in manometers, that is mercury barometers. So what is a mercury barometer? So I think when you talk of mercury barometer, so in mercury barometer what we will do? In mercury barometer we will take a container and we will fill the container completely with mercury. Now what we will do? We will take a tube and the tube is also completely filled with mercury. So this tube is open from one side. We will fill this tube completely with mercury so that there is no atmospheric air in it. Otherwise it will not operate properly. Now you close the tube and you invert it in the mercury and then you open the tube. So once you will open the tube, the mercury will settle at some point. Okay? And within this space, the mercury will evaporate and form vapor pressure. Now, as per hydrostatic law, this point A and this point B, they will have same pressure. So, pressure at A is same as pressure at B. So, what you will say? You will say pressure at A is atmospheric pressure and pressure at B is vapor pressure plus pressure because of mercury column. Vapor pressure plus pressure because of mercury column. So, P atmosphere will be vapor pressure plus rho mg hm, right? Now, how do you find out vapor pressure? It is a thermodynamic property. So, it depends upon the temperature. You will know the value of density of mercury. You can measure the height of mercury in the tube. Now, question is, why we use mercury to find out this atmospheric pressure? Because first of all, mercury has very high density. If we will use water, you know, we will require the density of water is less. If density of water is less, height of water in the tube will be more. So tube length must be high. It should be as high as 11 meters. So device will become very big. When we are talking of mercury, mercury is an extremely cohesive fluid. It does not stick to the walls of the surface, walls of the tube, and it forms a very clear meniscus. It is an extremely cohesive fluid. Therefore, the surface tension in mercury is negligible and capillary rise or fall is negligible. And fourth, which is again very important, the vapor pressure of mercury is negligible, but in water it is a significant value and it fluctuates with temperature. So ये चार important properties हैं which make mercury suitable for mercury barometer. ठीक है? What are the important properties? भैया, atmospheric pressure is around 1 lakh pascal. If you measure the pressure with water, water has a low density and height of water will be 10 meters. So the tube should be at least 11 meters. Secondly, if you use water, the vapor pressure of water, it fluctuates with temperature and it is not negligible. It is like 2 kilopascal, 3 kilopascal. So if I do not consider the vapor pressure, if I do not consider this, my answer will be wrong. And thirdly, surface tension of water is important. So there will be a capillaries rise or fall. That effect also needs to be considered. Lastly, water sticks with the solid surface. So if there is a small fluctuation in the pressure, the meniscus will rise up or fall down. But water will not give you a clear meniscus. So you will not get a clear reading. That's why. So these are some important parameters that we prefer mercury in the barometer. Okay? So most important answer will be this one. Most important answer will be this one. ठीक है? ओके, सो गाइस, आज के लिए बस करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? सो 29th को मैं सेशन स्टार्ट करूंगा पेंडिंग टॉपिक्स के लिए, बट आई विल कीप द सेशंस शॉर्ट, क्योंकि मुझे भी पता है कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी तैयारी करनी है एंड फ्लूइड मैकेनिक्स इज नॉट द ओनली सब्जेक्ट, राइट?
है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स सिर्फ अकेला सब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 29 से सेशन स्टार्ट करेंगे। सो 29 से जैसे छोटे छोटे सेशन स्टार्ट करेंगे ताकि आप इजिली उनको कवर अप कर सकें। So for hydrostatic forces, buoyancy, I will not teach questions क्योंकि मैंने उसके पहले भी क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। पर मैं सोच रहा हूं कि जैसे काइनेमेटिक्स हमने सुबह पढ़ लिया, 1.5 hour we will revise, and in the night when you also become lazy we will solve some practice question. Fluid dynamics we will quickly do 1.5 hour in the morning, and in the night when you become lazy we will quickly solve some previous year gate questions. ठीक है, तो उन चीजों के लिए मैं ऐसे कवर अप करने वाला हूं। So every day I will try कि 1.5 hour video is there in which we are able to revise the chapter, and in the night we are doing previous year questions. So I don't want to waste too much of your time क्योंकि आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स हैं, मगर फ्लूइड मैकेनिक्स आप मुझ पे छोड़ सकते हो। एक बार ना क्विकली अपने नोट्स से देख लो, कोई ऐसा टॉपिक लग रहा हो जो मिस आउट हो गया हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो मिस आउट हो गया है। हमने एक पॉइंट जरूर मिस आउट किया है, दैट इज वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, बट फिर मेरे को बाद में ध्यान आया तो मैंने सोचा कि मैं पंप्स में कवर अप करा दूंगा। कोई और पॉइंट हो जो हमने मिस आउट कर दिया और आप मुझसे बताना चाहते हैं, हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक और पॉइंट मुझे याद आया था, दैट वाज टॉर। व्हाट वाज द पॉइंट? टॉर। So guys, please note, say for example, I say 10 meter of water. So what do you mean by 10 meter of water? Actually, it is trying to say that there is a system and inside the system there is a pressure. The gas pressure can be of gas also. But the pressure is same as pressure of 10 meter of water. So how much is pressure of 10 meter of water? Rho gh. What is the density of water? 1000. What is g? 9.81. What is h? 10. So this becomes 98.1 into 10 raised to power 3 Pascal or 98.1 kilopascal. So pressure of the gas in the system is 98.1 kilopascal. Similarly, there is a unit 1 torr. So 1 torr is same as the pressure of 1 mm of Hg. So this will become rho gh. So rho is how much? Rho is 13,600. G is 9.81 and H is 1 mm. So 1 by 1000. This will become 133.33 Pascal. Then one more term which I missed out. So that term was dynamic viscosity. So what are the units of dynamic viscosity? So dynamic viscosity check, shear stress upon rate of shear strain. What is the unit of shear stress? Shear stress is Pascal, that is Newton per meter square. What is the rate of shear strain? That is per second. So this unit will become Pascal second. This is also equal to Newton second per meter square, and this is also equal to kg per meter second. So if you will talk of dimension, it will be ml minus 1 t minus 1. Now the same unit, if you will write in CGS, you will have 1 kg per meter second is equal to 1 by 10 gram per centimeter second. 1 by 10 gram per centimeter second. So this क्या कहते हैं, sorry, not 1 by 10 gram per centimeter second. So this CGS unit is called as poise. This CGS unit is called as poise. Now in fluid dynamics there is one more term, that is kinematic viscosity. So kinematic viscosity is dynamic viscosity by density. Dynamic viscosity says when the fluid will move, there will be a formation of boundary layer, and kinematic viscosity says what will be the shape of boundary layer. That boundary layer will form. This is told by dynamic viscosity. And what will be the shape of boundary layer? This is told by kinematic viscosity. So the units are meter square per second. And this meter square per second is 10 raised to power 4 centimeter square per second, which is called as Stokes. तो ये चीज मैं भूल गया था, ठीक है? So this you can note down. Further, if you want, you can also say कि भैया, if the temperature increases, dynamic viscosity of the liquid it decreases, and when we talk of gas, dynamic viscosity of the gas it increases. ठीक है? This happens with temperature. When you talk of pressure, मतलब for a liquid or ideal gas,
इवन इफ द प्रेशर इंक्रीजेस डायनेमिक विस्कोसिटी इज नियरली कांस्टेंट ओनली। ये इफेक्ट है। आप सेम चीज काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए चेक कर सकते हैं। चेक फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस विल बी योर होमवर्क। ओके, सो गाइस कोई डाउट हो तो बताइए। जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो मैं 29 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करूंगा। मेरा एम ये रहेगा कि मैं आपका डेली का ज्यादा टाइम ना लूं, क्योंकि बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो टू रिवाइज। सो मैंने पहले ही बोला है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स मुझ पे छोड़ दो। आप जब भी लेजी फील कर रहे हैं रात को, आप रात को वीडियो देख लिया करो, आपका काम बन जाएगा। तो 29 दिसंबर से हम चालू करेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स जो है रिवाइज करेंगे। सो ऑन 29 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली आई विल कीप अ स्मॉल वीडियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ब्यूएंसी एंड स्टेबिलिटी, एंड इन द नाइट आई विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द सेम। ऐसा होने वाला है, ठीक है ना? तो ठीक है, फिर बताइए कोई डाउट है तो। रजनीश बेटा टेंशन नहीं लेने का, मेरे से बात करने का। वी विल सेट अ प्लान फॉर यू। उस प्लान को फॉलो करो और अच्छे से पढ़ाई करो, जरूर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एनीवन? अनीश, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इफ ऋषभ इज देयर ही कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन। सो ऋषभ, व्हाट अबाउट ओसीएफ? ओसीएफ वगैरह में कोई डाउट है? भाविन, राघवेंद्र, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज डू लेट मी नो। भवेन बेटा कोई भी डाउट है तो बताओ। सो आज हमने 40% कैलो रिवाइज कर लिया है। एक्चुअली फ्लूइड स्टैटिक्स इज द बिगेस्ट चैप्टर। इट टेक्स फ्लूइड स्टैटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, ये बिगेस्ट चैप्टर है, इनमें बहुत टाइम लगता है। तो ठीक है, हमने बाउंड्री लेयर भी देख लिया, हमने प्रेशर मेजरमेंट भी देख लिया, जो अपने आप में 3-4 घंटे का टॉपिक है, और बाकी पॉइंट्स भी रिवाइज किए। ठीक है, वी विल स्ट्रेच एंड वी विल टेक टाइम। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा काम है बेटा, ठीक है ना? मैं टीचर के काम होते हैं, मैं बताता हूँ टीचर के क्या काम होते हैं। टीचर का पहला काम होता है टीचिंग, पढ़ाना। दूसरा काम होता है मॉनिटर करना। फिर तीसरा काम होता है कंट्रोल करना, और चौथा काम होता है मोटिवेट करना, ठीक है ना? सो जब तक मैं आपको मॉनिटर नहीं करूंगा, आपकी कहाँ कहाँ पे डाउट्स चल रहे हैं, तब तक मैं आपकी परफॉर्मेंस भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आपको मॉनिटर भी करना है। तो ये टीचर के काम होते हैं। सिर्फ एक बार पढ़ा के छोड़ देने से नहीं कंप्लीट होती ड्यूटी। ड्यूटी तो लास्ट तक चलती है, ठीक है ना? तो ये मेरा काम है, इसमें हेल्पिंग की कोई बात नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सिलेक्ट हो जाओगे, बस याद रखना वो काफी है मेरे लिए, ठीक है? चलो ठीक है, फिर सी यू। हाँ, पढ़ते रहो। मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉम सॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग और मैथ्स तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में, एक भी क्वेश्चन। और एप्टीट्यूड डेली का 30-40 मिनट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करो। इंग्लिश के क्वेश्चन को भूल जाओ। हम लोग यार अंग्रेज थोड़ी ना है, हम लोगों को इंजीनियर बनना है, हमें लैंग्वेज से क्या लेना देना। आप एप्टीट्यूड के जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं या वो रिलेशन वाले, लॉजिक वाले, उन पे ध्यान दो। एंटोनाइम साइनोनाइम मारो गोली, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं फिर, ठीक है? आई विल सी यू ऑन 29th। आई विल सी यू ऑन 29th। थैंक यू, बाय बाय।